I am Sameer Agrawal, conveyor for pre-engineered building, one of the focus sector for this Advantage Vidarbha 2024. It's an honor to extend a warm welcome to all the esteemed guests to today's seminar on pre-engineered building at Advantage Vidarbha Business Conclave 2024. First, I would like to make a request to everyone to put your mobiles on the silent mode, or maybe if you can switch off, as it will not disturb and distract others from today's technical session. Thank you. Today we have four distinguished guests here to shed light on the significance of pre-engineered building in the modern era and dispel some myths about PEB. Join me in welcoming each of them to the stage with a floral bouquet. I would like to request Dipen Agrawal ji, President, Keynote, to welcome our guest with a floral bouquet. First, I would like to request our guest, Prashant Deshmukh ji, please be on the stage. I would like to welcome Mr. Sushil Sanghi sir to please have a seat on the stage. Prashant sir, have a seat. Thank you. Now I would like to welcome our next speaker, Dr. Ramesh Meghrajani ji, on the stage, and I request Dipen sir to welcome him. Last but not the least, I would like to welcome our next speaker, Satish Raipure sir. I would request Dipen sir to welcome him with a floral bouquet. Sir, have a seat. Thank you, Dipen Bhaiya. Now, I would be introducing our first speaker for this seminar, Shri Satish Raipure ji. He has done his graduation in civil engineering from YCC Nagpur in 1966. He has done his MTech in structures from VNIT, now we call that, at Nagpur. He is a fellow member of Institution of Engineers and Association of Consulting Civil Engineers India, life member of India Road Congress, Indian Concrete Institute and Association of Licensee Engineers. He is a proprietor of Vignartha Consulting Engineers and Structurals and Project Management. It's a consulting firm with varied experience in teaching, structural designing and project management consultancy. He has a vast experience in designing various structures via bridges, captive power plants, buildings, townships, etc. He has to his credit a few prestigious awards for the outstanding structures all over Pan-India. A past chairman of ACCEI Nagpur Center, past vice president of ACCI West, past president of Rotary Club of Nagpur South, current chairman of IEI Nagpur Local Center. List is very lengthy, but I would request Satish sir to please enlighten our audience with his experience. Please have a warm welcome for him. Thank you, Sameer bhai, for that wonderful introduction.
Good afternoon, everyone. Today we have gathered here to see the revolutions in the steel construction. The structures in steel were not that popular in India, say around 15-20 years back. But if you see all over the world, many structures, world famous structures, they are built in steel. Like this Eiffel Tower, Crumbling Viaduct, its period of construction was 1850 to 1899. It's all made up in steel. This geodesic dome, it's completely in steel. Indoor football stadium, high-rise buildings. In most of the high-rise building, initial 1920 floors are always constructed in RCC, and thereafter everything is in steel. The World Trade Center that was collapsed due to the terrorist attack, that was also constructed about 19 floor, it was all in steel. But the steel construction was not that popular in India at that time. This Golden Gate Bridge, another bridge in steel. Mainly steel structures were used where RCC proves to be very costly, where the construction in reinforced concrete structures, the reinforced cement concrete, proves to be very costly, and sometimes it is very impossible, very difficult to construct it in RCC. Then only people used to go in the steel, with the steel. Earlier in India, it was mainly used for industrial purpose only. स्टील स्ट्रक्चर बोले तो जस्ट इंडस्ट्री फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ही स्टील स्ट्रक्चर, बड़े बड़े ट्रसेस, बड़े बड़े स्पैन, बड़े बड़े कॉलम, दैट काइंड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वी यूज टू कंस्ट्रक्ट. But nowadays, multi-storied buildings in India also are being constructed in steel. And mostly in rooftop coverings, they are all in steel. In industries like bunkers, silos, chimneys, gantry structures, bridges, towers, they are all nowadays constructed in steel. Conventional steel building are traditional metal structure constructed by rolled steel structure, which are designed individually and fabricated at site using welding or bolting or cutting. Before this pre-engineering building came into the market, we used to fabricate all the steel structures at site only. With the help of conventional I-beams, channels, angles or pipes. Later the parallel flange sections were introduced, and few years back the hollow sections. The rectangular hollow sections and the square hollow sections are widely used in everywhere. The main advantages of steel structure is its strength and durability. Its resistance, very high resistance to cyclones and earthquakes. It's very lightweight. It's very lightweight, hence the requirement of foundation is very less. It's very cost effective, although initially it is costly, the initial cost is costly, but later on if you see the maintenance and everything, you will find that the steel structures are cost effective. Flexibility, lot of flexibility is there. In RCC structure, if you want to modify the RCC structure, it becomes very difficult and very costly. But in case of steel, we can do number of modifications. The Sushil Sanghi will tell you more about this. At many places, because of changes in the requirement of the industries, we have removed the center columns. Had it been in RCC, it would have been impossible. But with the steel structure, the 16-meter span, we have made 32-meter span. And that too with the gantry, but that was possible because the structure was constructed in steel. Its flexible fire resistance is also very good in steel.
and the most important is recyclability. अगर फैक्ट्री लॉस में चली गई, डिसमेंटल करना है, तो एटलीस्ट यू विल गेट वॉट एवर द कॉस्ट यू हैव पुट at least 10-15 years back, that cost will be recovered by just by selling it in scrap. These are a few conventional structures that were fabricated at site, like industry structure, the stage canopies, transmission line towers, rooftops, porch of office buildings, the north light trusses, the industrial structures, the large span, the structures in buildings, again entrance porch, the reception of resort. This is the completed view of the resort, the bus stops. You can see the design. The number of possibilities are there with the steel sections. This is again a bus stop. This is in Mihan. This is the gate plaza of Mihan. The rooftops on bungalows. It gives very good appearance to the building if we provide the steel structures, use the steel structures. This is again a porch of a bungalow. Farmhouses. When there are advantages, there has to be some disadvantages too. Its initial cost, like in the beginning I said, the initial cost is very high in case of steel structures, especially in case of multi-storied building. When we go for the multi-storied building, the initial cost is very high. Another point is, if you don't maintain it properly, the corrosion. You also need to provide some fireproof coating and the limited choice of sections. In our market, we have got a very limited scope of the selecting size of the sections. If I want a channel section of 175 mm deep, I will not get that. Either I will have to go for 200 or modify with the 150. That in modification of the 150 going to be costly. And again, you selecting higher section, that will again add to the cost. Variation in sizes, that is also not possible. And the major problem is quality control at site. When we go for the conventional steel structures and we fabricate at site, number of problems are there. The quality of welding is not proper because we don't get that much of that kind of electricity to provide that kind of welding. Machinery cannot be used at site. Number of machineries cannot be used at site. And at site, we have to depend totally on the labor, the fabrication team. Nowadays, getting a fabricator is very difficult. You don't get number of fabricators at site. Then comes the PEB. The pre-engineering building, looking at the problems which we faced at the sites, this PEB comes as a very blessings to us. It was first launched by Interarch in 1983. This PEB, we were not new to the PEB, but it was not that popular. The Kirby started in 2000, I think. 99. The Kirby started in 99, and as on today, there are hundreds and thousands of PEB manufacturers all over India. Earlier, we used to see this kind of structures, typical godowns with walls, columns, and roof trusses only, covered with the sheeting. Now, this is the thing with the PEB. Very elegant looking, very nicely done. All these shades don't look like an industrial shade. This is another view of PEB, columns and beams.
This is the completed shed with the pre-engineering building. The long span trusses, that is also possible in PEB. Dome-like structures, stadium roof, and you can have this small structures also. That day is not that far. When if you want to construct a hardly 10-15 by 50 or 10 feet by 15 feet garage, you can order it to the PEB vendor and he will just come and see and supply the material, and that can be erected in no time. Today we are seeing lot many metro stations that are entirely being constructed in the PEB. Airports, the shopping complex, another airport. This kind of structure is also possible in PEB. This is the staircase. And this, we are constructing it at Pohora Devi. This is a dome, and we call it as Nagara. The bottom diameter of this dome is 62 meters, top diameter is 82 meters, and height is 32 meters. This is, we are doing it, the combination of pre-engineering building and the convention. The all drawings were prepared by a PEB detailer. Without PEB detailer, it was not possible. And we are fabricating it at site because no PEB supplier was ready to supply this kind of structure. We talked to almost 2-3 top PEB suppliers, but they refused to do this. The our Prime Minister Modi is going to inaugurate this in next month. The advantages of PEB. The main advantage is aesthetic. बहुत ब्यूटीफुल दिखता है. It don't look like an industrial structure. बाहर से देखा तो अलग ही लगता है. Second thing is quality. The quality which cannot be maintained at the site, that can be very effectively achieved in the workshop. Because number of machines are used, even cutting, bending, welding, all is done by the machines. The proper pressure, proper thickness, everything you get in PEB. That's why people are going for a PEB now. The accuracy, it's very accurate. Single one-stop solution for consumer. Factory finish, any product that is factory finish, it just look like the furniture that is being prepared at the home by a carpenter, and the furniture we buy it from the market. There we get the choices and the quality also. It costs less also. If you go for the higher area, the cost of PEB is less as compared to the convention. And the biggest advantage of PEB is the time. Within 6 months, your structure is ready to use. That is the biggest advantage of this PEB. Sourcing and coordination, that is also at one place. Fixed costs, lower lifetime cost, warranty, detailed design and plan, and very effectively done by the team of qualified engineers. Warranty and responsibility lies with one person only, one company only, and the complete transparency. It's a system-driven solution. It consists of engineering, the detailed design and detailing, and as per it can be constructed as per the manufacturer standards, the relevant codes that has also been very neatly followed, strictly followed. You can maintain the inventory of raw material, the production flow, very standard production flow, predefined erection procedure. Erection also takes no time, and detailing in PEB, detailing is the most important at every stage. That's all about the PEB and the convention structure. I thank you all for a patient listening, and let us hear more from the
stalwarts of this PEB industry. Samir? Next. Next speaker is Dr. Sushil Sangi. इनका इंट्रोडक्शन देना कुछ है क्या? बड़ा तो वैसे ही बताता मैं. Sushil and me are working together since more than 17 years. He is a director of Sangi Consulting Engineers Private Limited. Although he is an industrial engineer, but he is a, you can say, Kida of steel. Literally Kida of steel. If you ask anything about the steel, he will just reply you in no seconds. He is a project management consultant. Although he did his engineering in the industrial engineering from Ramdev Baba, later on he also did the LLB and MBA, then doctorate in construction management. He has got a very varied experience in buildings also, but majority of the experience in industrial structures. And he is going to talk on complex composite structures in PEB. Let us welcome Dr. Sushil Sangi. आओ ये लगा देता ना. अरे तेरे को यहीं भी दिखेगा ना, सबको इशू नहीं. वो नहीं है मेरा उसमें वो है. क्या? 3D और दूसरा सॉफ्टवेयर. Thank you, Raipure sir. Thank you, Mr. Samir Agarwal. Mr. Ramesh Meghrajani, who is the, for all your information, he is the first doctorate in PEB structural designing in India. And we have got the, respect of honor of having him present over here. So he will be briefing. Mr. Satish Raipure, as you have heard, and architect Deshmukh is a very eminent architect from Pune, who is widely involved in many projects. Now the question is, why I am here? I am neither an architect, I am neither a structural designer. But still then what do I have to do in these structures, or what in PEB, what is my role? So I just want to tell you कि necessity जो होता है, necessity is mother of invention. What does an architect do? When does he enter into a project? I am talking purely about industrial projects and critical projects. Architect is the second person to enter the project. The first person who gets into the project is project management consultant, who is first in and last out. बेटी की शादी करके मंडप वाले को पैसा दे के बाहर निकलना, that is the job of the project management consultant. Last person to go out of the project. So now the responsibility of a project management becomes immense, because कोई भी चीज़ को आपको जब करना है तो you have to frame it. And I have always got a motto, a well-defined problem is half solved. Now we have got so many doctors present over here, so many experts of structure, planning and all other things. But then what is the food for thought? How do you generate that? So we have to generate the food for thought and give it to the architects, and then subsequently it further goes down to the respective consultant. I do not know many of you, how many of you are from the industry, but otherwise when you do a project, there are around 20 consultants
or 20 different fields associated with a project till the time it gets completed. And structure or anything is a small part of that. Small but important part of that. So now, whenever an entrepreneur conceives a project, he comes with a brief, I have to set up a project. But then, how do we plan which kind of structure we have to use? हमको क्या चीज़ चलना चाहिए और सबसे अच्छी दवाई वो क्लाइंट के लिए क्या होगी? So lot of things are, lot of मंथन किया जाता है, and after that we come to a conclusion. We define the problem, we do the work breakdown structure, we distribute the problem into many small elements, and then we arrive ki yes, this is what is going to be the most optimal kind of a thing. Now we are always at loggerheads with the architects, because architects want symmetry. They want things to look beautiful. I am an industrial engineer, my forte is planning, industrial planning, all process planning, layout. So in my building you will always find one column is at 10 meter, other is 15 meters, other is 40 meters, whatever it is. First I place the machine and then I put the columns, which normally doesn't happen. That is why all these my structural designers, Ramesh Bhaiya is there, he has done a fantastic building for me, cold storage of Haldirams, where we were not allowed to have a big column. So we did a tube column. Box column we have done 16 meters by 50 meters was the total span that was there. Then height was 20 meters. So initially it did not come up with that. So after a lot of my insistence, nahi karna hi padega, because we cannot go ahead with that. So this is one of the things that is very important. A well-defined problem is half solved. जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो सोल्यूशन आएगा नहीं. तो सोल्यूशन लाने के लिए जब नस पकड़ी जाएगी तो यू विल गेट द सोल्यूशन. नाउ आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विथ यू. हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम द इंडस्ट्री सिटिंग इन द पब्लिक? आप लोग इंटरप्रेन्योर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एंड हाउ मेनी आर दी फ्रॉम द डिजाइनिंग फील्ड? ओके, अब देखिए नाउ पीईबी जो है, पीईबी इसका बहुत हवा बनाया हुआ है. क्या है पीईबी? कुछ नहीं है. इट्स जनरल फैब्रिकेशन. द ओनली डिफरेंस इज, एक हम साइट पे करते हैं कास्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑन साइट, दिस इज प्रोडक्शन इन फैक्ट्री. इट्स अ प्री इंजीनियर्ड थिंग. वही मैंने जैसे पहले कहा कि आपका नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन. जब हमारे पास पैसे कम होने लगे, जब हमारे पास समय कम होने लगा, रिसोर्सेज जब हमारे सिमटने लगे, तब पीईबी ने जन्म लिया. कि हम अभी जैसे हम स्टील सेक्शंस में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे आईएस कोड, आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से देयर इज़ अ फिक्स रेंज ऑफ सेक्शंस अवेलेबल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डब्ल्यू बीम्स, आई बीम्स, चैनल्स, एंगल्स, सब जो भी है, बट दोज आर फिक्स. आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू जस्ट पिक एंड चूज़ कि भैया कौन सा लगेगा, वो 10% कम है कि 10% ज़्यादा है. सो यू कैन नॉट अचीव इकोनॉमी इन दैट. दैट इज़ द रीज़न व्हेन यू आर मेकिंग अ पी जब डिज़ाइन करते हो, एंटायर थिंग इज़ डन इन, आपका प्लेट कटिंग में आप बनाते हो उसको, तो आपका गडर जैसे आपको 600 का जॉइस्ट चाहिए, विच इज़ अराउंड 125 kg पर रनिंग मीटर, सेम 600 का जॉइस्ट विथ सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपके पास में 50 kg पर रनिंग मीटर में बन जाएगा. ए भैया आप थोड़ा बैठ जाओ, हेलो बैठ जाओ थोड़ा. ये जो आपका जॉइस्ट है सेम जो 125 kg पर रनिंग मीटर में हो रहा है, दैट सेम थिंग यू कैन अचीव इन 50 kg पर रनिंग मीटर, सेम प्रॉपर्टीज़. अभी नेक्स्ट डॉक्टर मेघराजानी विल एक्सप्लेन इट टू यू बेटर. तो जब ये ऑप्टिमाइजेशन का चीज़ चालो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू गो इन विद द रोलिंग प्रोडक्ट, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, देयर विल बी मिलियंस ऑफ सेक्शंस, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर, एनी रोलिंग मिल टू मेक इट. दैट इज़ वाई जब प्लेट आ गया तो इट इज़ लाइक अ पेपर. आप जो बोर्ड बनाना है, जैसा आपको आर्टिफैक्ट बनाना है, आप बना सकते हो. दैट इज़ वॉट द रीज़न वाई दिस थिंग केम इन टू दिस थिंग. सेकेंडली, हम लोग का जनरल हमारा जितना भी जो कन्वेंशनल फैब्रिकेशन होता है, दिस इज़ डन इन 240 MPa. ये हमारा वो तकिया यानी पुराने ज़माने का चला आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है 240 MPa का है. और अभी जो पीवी आप बनता है मिनिमम 350 से चालू होता है. अभी तो सुपर आपका सुपर HT आ गया, विच गोज़ अप टू 450, 500. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस वन ऑफ माई क्लाइंट, दैट इज़ दे हैव गॉट अ स्टॉल हियर, सनविजय इंडस्ट्रीज लिमिटेड. They are coming up with super HT of 450 and 500. Recently, we have decided that we will be going in for plates, which is having a width right from 150 mm to 700 mm of various thicknesses. So there will be no wastage. Directly, you can use it. So we are working on that optimization also. So since we cannot roll the channels and joist and all, so we can provide you with the plates.
So this is, I have requested them, if this thing happens, it will be a very good thing, we can become very economical. तो अब दिस इज़ व्हाट इज़ पीईबी. तो जब हमने ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर लिया कि भाई हमारे मन के सेक्शंस हो गए, हमारी मन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो गया. बट अब ये टेलर मेड सूट हो गया. अभी आप जब टेलर के पास एक शर्ट सिलाने जाते हो तो आपको 200-300 रुपये सिलाई लेता है वो. 250 रुपये में आपको शर्ट मिल जाती है फुटपाथ पे. दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको समझ में आया कि मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर से आपके पास में एक आ गया कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ वेस्टेज, कि हमारा प्लेट हम लाके कर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, तो हमारा स्टील में भी कर रहे हैं. अभी स्टील का जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ फैंटास्टिक इन टेंसाइल, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, एंड कॉन्क्रीट इज़ परफेक्ट फैंटास्टिक इन कॉम्प्रेशन. बस दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करना, तो वो भी ठीक बात नहीं है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो अब क्या ऐसे होने लगा, भी स्टील का भी रायपुरे सर ने बताया था, एक गलती होगी उनसे. स्टील इज़ वेरी बैड एज फार एज फायर इज कंसर्न. स्टील का जो फायर रेजिस्टेंस इट ओनली हाफ एन आवर, एंड कॉन्क्रीट हैज़ गॉट 2 hours. तो हमारा जो आया, हमारा फायर एज पर एनबीसी और जो हमारा फायर डायरेक्टरेट बोलता है कि 2 घंटे का आपको फायर रेजिस्टेंस होना, बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पीपल. That is why it is very less preferred in residential buildings and all. Industry में तो there is no other option, but you have to go in for that. तो that is one of the reasons कि हमको देखना है. तो यहाँ पे that problem was addressed to a very large extent by the advent of composite structures. अब composite structures जो है ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है. अभी आपने देखा होगा, अगर somebody must have seen old घर जो थे, मट्टी के घर, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनते थे, जो वो कैसे बनते थे, वो लकड़ी लगा के, उसके ऊपर में मट्टी भर के, फिर उसके ऊपर में चूना लगा के, समथिंग एंड ऑल स्क्वाड, जितने भी एलिमेंट्स होते थे सबको यूज़ करके किया जाता था. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंपोजिट स्ट्रक्चर? मीनिंग ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर इज यूटिलाइजिंग वेरियस एलिमेंट्स विच हैव गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ and using them together. So when they synchronize, they form a property which is better than the original one. This is the entire concept of composite structure. तो इसीलिए जब हमारे पास बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड जब हमने सोचना शुरू किया, तो ये composite structures में हम लोग आए. composite structure में आके then things started moving on. अब देखिए पीईबी के अंदर में, अभी जैसे मेरा जो टॉपिक है कॉम्पोजिट कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स इन पीईबी. अब पीईबी के अंदर में आप कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपोजिट बनाओ नहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. बट जब आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जाते हैं, देन द एंटायर गैमेट स्टार्ट्स. अभी आपने देखा होगा पीईबी जब हम लोग के शेड्स बनते हैं, वी हैव टू कीप द वॉल इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलम. हमारा कॉलम अंदर बनता है, वॉल बाहर से बनता है. ये साधारण हमारा फैब्रिकेशन यूनिट हो या दूसरे टाइप का यूनिट हो, वहाँ तो इट्स ओके. बट व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल यूनिट, when it comes to a food plant, it is like death. उसमें इतना germs accumulation होगा, it cannot be a clean room. There is a term used as clean room for production. फार्मा में सब होता है, इसके got its own standards, good manufacturing GMP के उसमें आता है, तो वो आपका बन ही नहीं सकता. So that was the reason we came into start applying our mind into that. And we have recently one of our project is going on. It's at Nagpur only for Haldirams. It is a very advanced building. And I'll skip my general, I don't think you will be also interested in my theory बताऊँ मैं आपको. So I'll just move on to this. Kshitij. एक मिनट, I'll just tell you what are the types. जैसे composite structure बोलते हैं हम लोग, तो composite structures में आपके पास में beams, gutter, floor systems, जैसे आप इसमें लगा सकते हैं. कॉलम के ने कंक्रीट के अंदर में आपने जॉइस्ट लगा दिया, आपका कॉलम का विड्थ बहुत कम हो जाता है, इट बिकम्स वेरी नाइस. अभी आपका बीम्स एंड गर्डर्स है. अभी हमने 97 में एक जगह यूज़ किया था, अगेन इट वाज अ नेसेसिटी, हल्दीराम का ही प्रोजेक्ट था. अब कॉलम्स वे 6 मीटर सेंटर एंड 8 मीटर सेंटर अदर दिस थिंग फर्स्ट फ्लोर पे. दे हैड टू फिट सम मशीन ओवर देयर एंड एंटायर विड्थ अवेलेबल वाज 600 ओनली. सो लेट डॉक्टर रामाराव मेरे गुरु, ही वॉज द स्ट्रक्चर डिज़ाइनर देयर. तो वो टाइम पे हम लोगों ने ISMB 450
विथ प्लेट वेल्डेड द टॉप एंड बॉटम, वो हमने बीम में डाल के इस्तेमाल किया था, एंड 12 मीटर्स का वी हैव क्रिएटेड अ स्पैन इन एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. सो इट वाज दिस काइंड ऑफ अ थिंग जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें. ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यूज़ किया था. ये डेक स्लैब है. डेक स्लैब इज़ अगेन अ वेरी नाउ डेज अ वेरी हॉट केक, फास्ट फूड. डेक स्लैब डाल दे रहे हैं लोग, फटाफट फटाफट बनाओ, इंडस्ट्री करना है, ऊपर लोहा डालो, शीट डालो, कंक्रीट डाल दो. बट इसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये आता है, डेक स्लैब जब डाल रहे हैं तो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इवन अवेयर ऑफ द थिंग्स कि डेक स्लैब जो है, देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन. नीचे आपका जो मेंबर हो गया, ऊपर आपका डेक शीट आ गया, फिर स्लैब आ गया. दे हैव गॉट अ डिफरेंट मूवमेंट. वो आपको यू हैव टू अरेस्ट दैट. वो अरेस्ट करने के लिए आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ शेयर स्टड. ये नहीं लगाता है कोई, तो लोड डजंट गेट ट्रांसफर डायरेक्टली. दे हैव गॉट, वो रहेगा, बट पहले उसका जो टोटल लोड है वो शीट बेयर कर रहा है. बाद में जब फुल लोड उसका लाइव लोड आएगा तब ठीक है ट्रांसफर होगा, बट देन you will always have problems of cracking and all sorts of, because structures are behaving independently. They are not having a composite behavior. So as far as composite structures are concerned, this is one of the most widely used item, that is deck sheet. अब इसमें भी हमारे पास में ये स्टड लगाना, एक स्टड लगाने का 150 रुपया लगता है. ब्रिजेस के ऊपर में आपने देखा होगा, ब्रिजेस के ऊपर में आपके स्टड्स लगते हैं. जब स्टील गडर है, स्लैब डालना है तो छोटे 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 गुटके लगे रहते हैं. पीपल डू इट. अब क्लाइंट डजंट वांट टू स्पेंड मनी. Then again we have come with an innovation. हमारे मिस्टर समीर अग्रवाल एंड मिस्टर भूषण, पैसा बचाना है, कैसे करेंगे, तो प्रोजेक्ट गया. सो वी डिसाइडेड टू वेल्ड द चैनल्स ओवर देयर. एज वी आर यूजिंग नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टील ISMC 100 एज अ shear stud, and uniformly we are welding on the below joist and then using them as a shear stud. तो ये एक अपना इसमें होता है which is necessary. ये अभी एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मैं भी बॉक्स कटर का बता रहा था. हमने ये प्लान किया था, डॉक्टर रमेश को मैंने यही रिक्वेस्ट किया था, बट फाइनली ही कुड अचीव द स्ट्रेंथ विदाउट फिलिंग कंक्रीट इनटू दैट. बट अदरवाइज दिस इज व्हाट आई हैव सजेस्टेड यू भैया. ये जैसे बॉक्स हमारा आया है, ये बॉक्स कॉलम हो गया. बॉक्स कॉलम के अंदर में कंक्रीट फिल करते हैं, बट देन पीपल, अभी दिस आप इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा है, but to my mind this is not a very good proposition, because then steel being at the outer face, फायर का उसका प्रॉब्लम है ही है. देन सेकेंड आप देख रहे हैं ये वाला जो है, इसके अंदर गडर अंदर है. नाउ दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड वन, बट देन फूड इंडस्ट्री डजंट परमिट दैट. फूड एंड बिकॉज फिर आपको ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आ रहा है. तो यहाँ पे आपका जब आप उसको एनक्लोज करते हो तो आपका फायर प्रोटेक्शन, दैट इज द ओनली पॉइंट. फायर प्रोटेक्शन आपका 100% हो जाता है, एंड देन स्ट्रक्चर का जो सर्वाइवल इट बिकम्स इमेंस. अब इसमें देखिए आपका सारा बिल्डिंग का ले लेते हैं. ये आपके पास में देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस. सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे रायपुर सर ने बताया, अभी आई एम गोइंग टू शो यू वन केस स्टडी. द बिल्डिंग इज 58 meters by 200 meters, and it is 3 floors. And each floor 6.4, 11.2, 16.5, and the live load on the floor is 1.5 tons per square meter. So we have designed it in such a way that we have taken large spans, 15 meters by 15 meters, and the depth of the beam is not more than 1 meter. Here again there was a huge problem. We have got RCC column, because यहाँ पे हम लोग at that time it did not click to us. It was not possible to first make the steel column, then encase it and then do it. So we went in with normal RCC column. जब हमने RCC column बनाया तो there was a bracket, there was a corbel on which, because only columns were in RCC, because we had to take wall over there. Rest everything was supposed to be in steel. तो there was a corbel, bracket दिया गया था, bracket के ऊपर में beam आना चाहिए था. But then that bracket का जो depth था, that was again below the beam. Depth of the bracket plus depth of the beam, तो entire purpose got defeated. Then with the last resort, हम लोगों को वहाँ पे we had to cast the bolts directly into the columns. Vertical face पे we had to this thing put the bolts, and there was a complete mating of steel structure and RCC column. So that was a very unique thing for us to do, but it was very difficult because each plate was having around 14 bolts. And
that too it has to be executed in tandem with the civil contractor and the PEB, because there is only a 5 mm variation in the steel plate that is provided. So in 14 bolts, the combined variation is 5 mm. So the alignment of the bolt was of immense importance. So I'll just show you how we have done that. This project is of Haldiram's. I am not showing the machinery part, I am just focusing on the total structural part. Check. Hello? Hello? This is the building. Open it up. See, here we have got columns at different levels, like a floor at different level. And this is a complete clean room technology. It's with all international collaboration. It's very high kind of a thing. So we'll just show you how we have done. So यहाँ पे हमारा देखिए whatever internal structure is, it is completely of the steel. And face पे हमारा जो आ रहा है, that is our this thing RCC columns only, columns and beams. Here there is a junction, because we had to take the walls over there. बाकी का हमारा जैसे आया. Now you see the importance of composite structures. सबसे पहले हम लोग का beam का depth कम हो गया, and then good amount of services are passing. It has got air conditioning, it has got firefighting, it has got gas lines, it has got electrical lines, it has got water lines, n number of items are going. This is a complete BIM model that we have made. तो यहाँ पे हम लोग का पूरा अंदर जैसा we could get it done. Show the next frame. And when we started with this, we again landed in a problem. Suddenly there was a requirement that around 20,000 square feet of RCC structure is required. So what here we were connecting steel to RCC. Now here we had to connect RCC to steel. So that was a big problem that we encountered. So you can see this. There is a star column inside the concrete column. So we had to encase the entire column. So this became a classic composite column. And then show the beam. Show the concrete beam. These are all concrete beam resting on that, because this was a heavy watered area. यहाँ पे lot of water work was supposed to be done. So this was an afterthought, but yeah, we had to get it done. Now the beauty of this thing was, again, the composite structure hai, why this is a complex concrete structure. Had it been RCC structure, modification would have not been possible. As it was a steel structure, we can do any kind of modification at our will. So this is what was done over there, and these are all deck slabs. It is completely around 3,000 tons of steel has been used here. Now the project is near completion. Shadish, thoda dikhao andar jaake. Show this. This is one of its kind project that is around 4 lakh square feet is total construction area. Actual time was 240 days for this entire project production, but we got slightly late, so we are completing in 13 months now. So हम लोग का 8 months का था, but because of monsoon and some other restrictions, ये हम लोग कर से. Had it been a normal building, this would have taken at least 24 to 30 months for this kind of a structure. Heights are very huge. 6.4 meter is the height of the slab. So you can see lots of things. We have used drywall also. That is also part of a composite structure. यहाँ पे हम लोग का puff panels are being used. तो हम लोग वो भी avoid कर सकते हैं. Entire thing is flexible. आपको जहाँ पे जैसा change करना है, you can get the things done. और कोई तोड़-फोड़ नहीं है इसके अंदर में. Entire MEP जो हम लोग का है, you can see ये तीनों floor connected हैं इसमें for this thing production के. तो यहाँ पे हमारा जैसा पूरा चीज़ आ रहा है, तो very smoothly you can do it. There is no core cutting, there is nothing. So this is the advantage of a composite structure. तो अभी हम लोग जैसा बात कर रहे हैं, तो now this is the need of the industry. अगर हम लोग करते हैं now this project
Let's assume it is around 300 crores. So what is the interest burden on daily basis? Even if you save 3 months of this project, the project entire construction becomes free. So this is the advantage of the composite structure. And now I am proposing that here we have learned one more thing. Like we could have gone with the steel. I will just show you the photograph. Kshitij, move on to photographs. Go to photographs. आगे जा. ये देखिए यहाँ पे you can see the bolts, number of bolts which are fixed in the column. यहाँ पे इसका bracket itself यानी जब यहाँ पे 1200 का beam था हमारा जो main जहाँ पे हमारा 1.5 tons का loading है तो उसके लिए all these bolts उसका accuracy that was of this thing. आगे जा. And the height of the structure is around 20 meters now total. Here also at the आगे जाओ. All side columns are steel columns, so we have first made the column so we can start erection with the we can start with the erection. Then we have connected with the beams, so all dowels and all. So it was a very what you call brave attempt. We had a lot of hardship also, but then finally we could do it. So these are the actual photographs. Now project is near completion. So this is all about the complex structures, and that is why I wanted to bring to your knowledge कि आप ऐसा कर सकते हो. You can save your time, you can save your energy, you can save your money, and you can save the loss of profit that you are going to get from the new venture that you are going to start. Thank you. थैंक यू सुशील सांगी सर. सर का एक ही फंडा है, सीधी बात, नो बकवास. जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सोल्यूशन दो, कैसे भी दो, कंपोजिट दो, पीबी दो, कन्वेंशनल दो, लेकिन कॉस्ट बचाओ और सोल्यूशन दो. तो सर का यही फंडा है एंड ही इज़ वेरी गुड एट दिस. थैंक यू सर फॉर एनलाइटिंग अस. नाउ आई वुड वी हैव अनदर स्पीकर, आर्किटेक्ट Prashant Deshmukh sir. He has done his BAj from JJ College of Architecture, Mumbai in 1976. He has worked with major corporates of India, all the major corporates of India. He has worked with Taj Group for Hotel President Mumbai and Old Taj Mumbai. And he has also worked with various corporates like Godrej, Mafatlal, Mahindra, Bajaj, L&T, Bombay Dyeing, Mehras, etc., to name a few. He has received awards for his professional contribution from Architect, Engineers and Surveyors Association. As a Silver Award 2008 for his project Kirloskar at Ahmednagar, and Jury Recommendation Award in 2008 for his allied services to John Deere Equipment Private Limited. His outstanding design by German company Kaiser Compressors Private Limited was highly appreciated and awarded the best industrial project of the year by the Builder Association of India. He is currently doing projects for PDA, redevelopment of railway stations, Nagpur, Sevagram, Amla, Hinganghat, and lot many at all over India. The list is lengthy. I would request Prashant sir to please come on the stage and enlighten our speakers, guests. My topic, I must appreciate both the speakers before me because they gave a huge perspective about the PEB. Sir started from what is PEB, how it came, and let me tell you in 1983, Interarch which you showed, the first building in PEB was designed by me. Okay. So I was a pioneer in getting the pre-engineered building in India.
And I must have done more than 1,000 buildings by now with a lot of awards. And today my topic, of course, is going to be different because I was told to be speaking on innovations. And about 3-4 days ago, I spoke a similar lecture at Tata Blue Scope in Pune. And they are coming up, of course, with newer projects, materials and things like that. So I think today I selected what could happen as far as industrial construction is concerned and how this can be more effective and innovative. You know, being an architect, you know, we are taught about the definition of being innovative or definition of creativity. The definition of creativity is a phenomena where you start thinking of something which never ever existed in the past. भूतकाळाशी साधर्म्य साधणाऱ्या सगळ्या मनाच्या खिडक्या बंद करा आणि एक नवीन खिडकी उघडा आणि ती खिडकी जर तुम्ही उघडू शकलात त्याचं जर धारिष्ट्य दाखवलं तर त्या खिडकीच्या पलीकडे तुमचं स्वागत करण्यासाठी तबक घेऊन परमेश्वर उभा असेल. अरे टाळ्या वाजवा एवढं सुंदर वाक्य बोललो. एनिवे गो अहेड. कॅन समबडी प्रेस? Go ahead. Yeah, this is a quick thing about me. Ranker from JJ College of Architecture, gold medalist way back in 1976. Consultant to Taj Group of Hotels. I was never an employee. I was a consultant from day one. Then I was trained in Zurich, Switzerland. And that's where I learned and did many buildings in pre-engineered. The industrial structures can be as beautiful as this. Industrial structures can be as beautiful as this. That's an Italian structure, which is Del Otto. That is CD, which is a German company. That's Economy Process, a small unit. And Indus at Taloja, somebody was talking about multi-level steel buildings. You know, each of my mezzanine is loaded with 7 tons per square meter, sir. 7-ton mezzanine loading, 3-4 stories. Can you see that photograph? That is there being awarded recently. So that's the one. And this is Amber at Supa MIDC, which is 3.5 lakh square feet, built in a record time of 6 months. Of course, I have built 45,000 square feet factory in 45 days from pencil to production. So that miracle can happen only with pre-engineered buildings. Next. And now we are coming to stations. The redevelopment of railway station is something which I want to do it for our country. Putting in all the skills that we have. We talked about the hybrid technology of concrete and steel combined. And that is, you know, these are some of the stations that will happen to you. So the redevelopment of railway station in Chinchwad is going to be the pride of our country. The infra railway station at Kurduvadi is the main junction, as you all know. Because there are some colonial architecture buildings, we are trying to use that technology. There is a logistic park which we are doing over 50 acres in Bangalore. This is a new airport which is the Riva airport. Now there is a new concept coming up in warehousing. You know, in places like Thane and Mumbai, we have no space. You know, in Nagpur we have space and space and space. But there we don't have space. So can we have warehouses in multi-stories? Now that is what we are doing in Thane, which is known as CT1. The formula is known as CT1. So CT1 means multi-storied warehousing. Again, for the structural engineers who spoke before me, heavy loading conditions on the deck slab, as also the columns and the beams. So that is that structure multi-level warehouse. And this is that infrastructure township in Bangalore. Yeah, the other one which is showing there is a new concept, and I thought this would be a very good concept for Nagpur. You know, because I was told that there are some industrial areas here where people have to travel a lot to reach the workplace. Now, this is concept called IIT, Integrated Industrial Township. If you people can convince the clients or the investors
to set up a township of about 25 acres and more. Government has got some facilities to be given, benefits to be given, and we can come out with, let's say, 50 or 70% of the industrial area with a warehouse and 25% with the residential, commercial and support system areas on the other place. We are doing it about 100 acres in Chakan. Okay, next. So what is innovation? As I said, bring about new ideas and methods, products, services or solutions that have significant positive impact as well as the value. Because many times people think that architects do not play with the figures, they are not bothered about the value. But I am saying that we offer something which is value-based. It involves transferring creative concepts. I told you about creativity right now into tangible outcomes that improves efficiency and effectiveness. So the buildings have to be aesthetically pleasing. You saw some of those pictures. They have to be very effective as far as the function part are concerned. And they have to be very efficient as well. Next. Challenges in traditional construction faces inefficiencies and safety concerns. A lot of labor is involved, manual labor and outdated processes hinder progress. Embracing innovations is crucial for overcoming big challenges. See, today in places all over, most of the urban areas of India where we are doing projects, we find that there is no labor. The manpower itself is getting diminishing. And what is this manpower now? It is coming down to about 10 to 15% than what it was earlier. We have some people coming from, I think, Assam and Bihar and all those areas, I don't know. I'm very weak at the geography. But from there, these guys come. And then, they want to go back home. I mean, they have festivals and kite playing in Gujarat and things like that. So how do we go ahead with the construction activity as such? Next. Digital transformation in construction. Now, here is the boon. That is the digital transformation. We have so many softwares. I keep telling nowadays to all the architects and engineers of India that you will succeed provided you have mastered the latest softwares. If you are not good at softwares, you are not good at all. So you need to be working on softwares. Somebody told me that they are working on AutoCAD designs. Now, AutoCAD, believe me, is not going to be there on the platter of working in the next 3-4 years. It will disappear. So we have Revit and we have BIM and things like that are coming up. So various advanced softwares from designing. What does that software do? They help you designing. We are also talking about artificial intelligence. I'll come to that later. But they help you designing, they help you drafting much faster than what we used to do in Bachman. So drafting, representing, detailing. Now detailing is something very, very important. And when it comes to pre-engineered building, mind you, it is not the fabrication the way we were doing conventionally. We make these buildings with a proper detailing with the help of the softwares. I always say, everywhere in the country, people keep telling me, hum PB wale hain. Then I ask them, what is the software you are using? The first question is, what is the software you are using? Are you working on STAAD.Pro, which is not supposed to be a software for steel building design and detailing? So are you referring to softwares? Because it is all depending on softwares. If you're talking about Zamil Steel, they have their own softwares. All the leading pre-engineered buildings in the world have their own developed softwares, which give them very aesthetically pleasing junctions. See, it is the design of junctions which is more important. And making the building look, in the skeleton should look beautiful. The naked skeleton should look beautiful. There is no need of painting. There is no need of putting in concrete the way somebody was telling right now. So clarity of construction to be taken up in shortest time frame. Remember this. As I said, 45,000 in 45 days. Because the machine had already started from US. And before it landed into Pune, they wanted the building ready. Please see that. So this is the time which has come. The clients will say, wanted yesterday situation. They said, Deshmukh sir, hum to jara thode late aa gaye aapke office mein. Actually, we wanted the project to happen in yesterday. So how will you compete with this?
So you require the latest techniques. Next. Now, as I always say, there are 4 aims that make the construction. And it is very, very important to review the 4 aims. As I said, the first aim is manpower, जो कि हमारे पास अभी रही नहीं. We say that India is a country of full of population, but useless population, I would say, as far as construction industry is concerned. It is so miraculous, I meet a lot of my international friends. They say, what a great, miraculous country India is. If you visit any construction site, there will be 10 construction labor speaking 10 different languages, and the project manager is dictating them and getting the work done. I mean, it is something beyond what God can do. So this happens only in India. M is manpower, M is machinery. Machinery will give you ease and speed. And mind you, let me tell you, very frankly, we are so lucky. Every single day, 3 new technologies are landing in our country, as far as construction is concerned. Only thing is we need to study it, we need to experiment it, and we need to improve it, because जुगाड़ is the word that we always have. हम लोग गोरों को टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जुगाड़ से अच्छा करते हैं, जो कि it will suit in India, isn't it? So that is something which we need to do. Don't be lazy about it. We have those tower cranes and whatnot, and we keep doing, drilling the tunnels now. Can you imagine a Sardarji drilling a tunnel for, most of the tunnels are drilled by a Sardarji guy. And we have so many jokes on the Sardarji, but they are so intelligent. And I saw them, with great amount of machineries which are creating those tunnels, including the one where we had the accident recently. So, and the methodology, methodology is important. Now today, methodology is important. In those days when I started construction, M for manpower was important. कितने आदमी थे, that फिर भी वापस आया and all that. So, there was a time when we were talking about manpower. Now is the time where we should talk about methodology. And for the methodology, it requires hard work, education, updating ourselves. College एक बार हो गया तो भूल नहीं जाना है. We have to keep updating ourselves every single day, because the technology keeps landing. And that is softwares, planning. A lot of people tell me that I work on MS project. No, MS project, they are using that software only for designing. You will agree with me? For setting up things. But do you track them? Yet tracking methodology is more important than the basic thing, In the earlier days, we had something called as a bar chart. You know that bar? Not the evening bar, the bar. So the bar chart was quantities versus time. It did not give us tools to achieve our targets. The MSP gives you the tools to achieve our targets. Are you with me? So that is why you must do MSP. Forget bar chart. Forget even the critical path method, the CPM. Forget it. We need to work on MSP, because that will tell you what is the quantum of work, quantum of labor required, what is the quantum of machinery required, how it is to be done, how many days you can do it, can you prepone the activities and do it, can you do simultaneous activities and achieve it. These are the things available through the softwares. Planning, tracking, detailing, resolution of problems. Now there are many issues always keep coming on sites, and I know that there are students who say, sir, जो कॉलेज में सीखते हो एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं होता है. No, I am against it. I am an educationist myself, advisor to 2 vice chancellors. I don't trust that sentence. I say that, you need to think. When you are on site, these issues will happen, because you have never anticipated that. Your programs and softwares probably do not anticipate that. Like the water subsoil water coming up and shooting up. Or suddenly, you have done some soil testing where rock was at about 10 meters depth, and suddenly you find at some places the rock is happening at 2.5 meters. What do you do with your structural design? So there could be many things. And then M, of course, is money. Saving in cost due to saving in time. I'm sure my friends here explained it in detail as to how a better technology can save time, how a better technology can save cost.
in terms of steel, in terms of concrete. Okay, now I always say that pure concrete construction is going to be out of the world in the next 5 years. Please make a note of this statement. Pure concrete and RCC structures are going to be out of the world in the next 5 years. It is going to be these hybrid structures who are going to survive for all our constructional needs, because they have changed quite a lot. We require long spans, we require big heights. Next. So newer sustainable materials are required. Now we are talking about sustainability, and let me tell you, concrete is not a sustainable material, steel is. All the bridges that are built in steel by the Britishers are still there. They are surviving. They are surviving more than 150 years. And how many years you want them to survive? So steel is the most sustainable material. You will be surprised. Glass is also the most sustainable material, provided it is treated properly. So can we use sustainable materials? And then it comes to steel and some metals. I will not talk of metals today because that is not the topic. Easy to install material offering aesthetics. Technologies such as now what are the technologies I am trying to suggest you? The pre-engineered technology, yes. The pre-stressed technology is the one there, and we have a PT slab. Now they were talking about the spans of the slab. When it comes to post-tensioning, we can go to any span. Believe you me. They were talking about 6 meter by 8 meters something, you know. I think we can do it with 16 meters by 12 meters very easily. Very easily with post-tensioning. The example is you got a clothesline, put the clothes, it will sag, bending movement, stretch it up, both ends, it will stand straight. That is post-tensioning. Okay, so go for post-tensioning, and of course the prefab structures coming. Now believe you me, the prefab structures which are coming not necessarily in RCC, but they are coming in Jugaad also. They are coming in hybrid structures also. So we have some E-walls. There is something called E-walls product that has come up, wherein for about 6-inch wall, 9-meter height, you can erect it in an hour's time. So these are the things that are coming up as far as the prefab things are concerned. So we have time saving, cost saving, and better construction solutions. Improvement in quality of materials, including major materials like steel and cement. Next. More and more innovative use of metals and their hybrid composition offer state-of-art construction. Pre-engineered building and prefabrication construction areas, streamlining process and reducing the project timelines. Off-site fabrication and assembly are enhancing productivity and quality. So what we do today, we don't have to do it on site at all. We do the designing proper, the drawing proper, we do the detailings in the offices, and we get the things fabricated or created in the workshops. Just pick it up and put it there. I don't know whether it is a part of this, but there is another technology which has come, which is called as a light gauge form steel. And you know, I had a condition where in an existing factory, they wanted a G+1 structure to be erected without any disturbance to the production. No dust allowed. So we went for the LGFS technology, no excavation, no plain beam, whatever we learned in construction lectures in studios in our colleges, no excavation, no plain beams, no footings, G+1 structure in light gauge steel. And that it in 30 days. Okay, so it is possible, and therefore we are talking about off-site fabrication. Next. Robotics technologies and automation are transforming construction tasks. Autonomous vehicles and robotic arms are improving efficiency and safety on construction sites. And as I said, artificial intelligence-oriented new techniques are on the horizons of construction skyline. I think a couple of years later, if you invite me here, I will not be talking about these kind of construction techniques that we have, but we'll be talking more on how artificial intelligence has offered and transformed the entire construction approach in terms of designing, in terms of even execution,
in terms of time planning, in terms of cost planning. Next. Embracing sustainability is a key aspect of the industry's evolution. Green building practices and renewable energy integration are reshaping the future of construction. Building needs to be designed and constructed as per the norms set by, I hope you know, all these green building norms, the codes that we have. They get carbon credit benefits. So we have IGBC, LEED, and GRIHA and things like that. And we need to design now all the buildings where we have a lesser carbon footprint. Now it is not only designing with concrete or steel, but it is also assessing whether we are saving carbon footprints. Now this is more complicated than what probably, maybe it will make you a little heavier than what initially you thought. But this is the new regulation that has come. And of course, recycle, reuse principles making the built masses nature-friendly and user-friendly to withstand climate change. I'm sure each one of you are facing climate change. And we are facing climate change because of the errors and the mistakes that we have done in the past. So let us try to give them up and think very seriously about reuse of various materials that we are trying to put in. And my friend, of course, he insisted, he informed you that steel is one material which can be reused at least for around 80 to 85%. So that is where we can promote steel as a construction material. Concrete, as you know, cannot be reused at all. Next. Technology and materials to be employed offering lesser carbon emission, designed to focus on maximum natural light within the buildings. Can we have natural light within the buildings? I always wonder, the place which requires maximum ventilation, maximum light, like the washroom, we give the smallest possible window. Now, that is the kind of approach that we have. I saw their factory in the afternoon, asked him why there are small windows in a big bay of 8 meters. Why? What is the reason? Why not continuous windows? Because every place you are working, every place there is a machine, there is an operator. Usne kya guna kiya hai? So give him all the wind and light, probably you may not require this light. So please see that we concentrate more on the natural light, maximum ventilation, reducing load on air conditioning, and maximum use of natural energies such as wind, solar, and water. Now we are thinking about solar, but are we thinking about solar for a light energy, light energy, or we are using for hot water? It is a question to be asked, or we are using both. Are we using the wind power? And the last one, of course, is are we trying to save water, recycle it, and reuse it? Next. Harnessing the power of data analytics and AI is optimizing the decision-making process. Predictive analytics and AI-driven insight are enhancing project management efficiency. So this is, of course, just a punchline to you right now. Maybe you go home and think about what is really mean by this statement which I have made. But that is going to be the topic of tomorrow, I'm sure. And that is why I made this bold statement. Next. Collaborative platforms and cloud-based solutions are fostering seamless communication and coordination across construction team. Now, as somebody said, my honorable speakers before me said that you require 20 plus consultants today. And the project manager has to be a leader to coordinate all these different kind of disciplines where we have the experts on the construction team. And we don't just coordinate with them. We don't just tell them that, hey, look, you do this. But we try to understand what they mean and how they resolve this problem. So all these solutions can be put together and we can arrive at the most popular, most useful, most contributing solution, and that is what is the requirement and a challenge to the project management today. Real-time collaboration is enhancing the project efficiency. So collaboration has become very important. The word team has become a very, very important term. You know what is team means? Together, everyone achieves more.
together everyone achieves more. So can everyone really achieve what we want to achieve as together? Next. Most of the construction shall have collaborative and cohesive contribution not only from architecture perspective, but also various support designers for electrical, I just talked about it, electronic, air conditioning, building management systems, piping, solar energy, green and sustainable inputs, ambient and internal light and air conditions, wastewater disposal, purification, recycling, and controlling use of water. These are the various options, whether it is a small bungalow or a huge industrial complex. We need to have all these elements in place. And we must make them contribute in a very big way for creating that collaborative, successful solution. Next, please. Adapting to change. There has to be a culture of adaptability which was missing all these years. So there has to be a culture of adaptability. As an educationist, I always, speak at the institutes and say, how can you teach the subject called building materials? Because every single day there are 5 new materials, on my desk. 5 new materials, 3 new technologies. What are you going to teach the students? Because by the time you teach, it's like the mobile number, mobile model number, which is something X in the morning and Y in the evening. How are you going to do it? It's the biggest challenge, my dear friends. And we need to address it. Flexibility and openness is the only solution which will change our essential and staying ahead in evolving construction landscape. Yes, next. Future prospects, future of industrial construction is brimming with possibilities. Embracing innovation will lead to sustainable, efficient and cost-efficient solutions. Journey towards revolutionizing construction, my dear friends, has just begun. We have been constructing, but that was not a journey. It was never a Taj Express or a Deccan Queen. Now we are into those kind of trains where we want to fly off with the construction technology. Next, please. So my best wishes for the growth of industrial construction in Vidarbha with the highlighted innovative approach. Thank you once again for a patience hearing, and I hope you enjoyed. You are welcome to contact me anytime for any kind of support that you require or advice that you require. I have been advising so many people, so why not? I have been a guest faculty to the Indian Railway Institute of Civil Engineers, which is the Asian level institute in India. And most of the government railway officers today are my students. So that's it. Thank you. Next speaker is Dr. Ramesh Meghrajani. He passed out from VNIT. At that time it was VRC. They did MTech from IIT Mumbai. And then later on he completed his PhD on pre-engineering building from VNIT. He was working with Kirby for many years, and actually he brought Kirby to the Nagpur. In short, we can say he brought pre-engineering building to the Nagpur. I still remember in 1999 and 2000, Ramesh and me used to visit many industrial houses to promote this pre-engineering building. At that time, we were asked the questions, what is the rate of steel? Say 50 rupees per kg. What is fabrication cost? 5 rupees. 55 rupees per kg, and you are selling it at 90, 80 rupees per kg. It was very difficult to convince the industrial houses to go for the PEB. They were hell-bent on going for the conventional structures. Any new thing gets lot of time to get publicized and accepted widely. So I request Ramesh to throw light on superstructure for sprawling process plants with PEB. Thank you. गुड पहले मैं सोच रहा था गुड आफ्टरनून बोलूँगा, अब गुड इवनिंग बोल देता हूँ बिकॉज इज ऑलरेडी आई थिंक 5:40. ओके,
Sir, which language I can use? Hindi, Marathi, English, Hindi? Chalega, anything? Anything chalega? Good. One, how much time do I have? गागर में सागर भरने को बोल रहे हैं. Simple thing. Okay. हाँ, okay. I hope you are still awake. You are not asleep. Normally afternoon में session दो तो मैंने समझ लो मैं 25 साल से पीईबी में हूँ और 4 प्रेजेंटेशन हर साल कर रहा हूँ तो 100 तो हो चुके हैं मेरे. ये पहली बार हो रहा है कि कम से कम 2-3 जनों ने पहले दे दिया, मुझे बहुत कम बोलना है. ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. ओके, few things I will go on with the things at a rapid speed, and if you wish to ask anywhere in between, please do ask. इंटरएक्टिव है तो मुझे मालूम हैगा कि तुम जाग रहे हो, सोना नहीं है, 6 बज रहे हैं, सो मत. ओके, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग डे और इस पर से संडे को ये सब कर रहे हैं तो ओके. नेक्स्ट प्लीज. हाँ ठीक है, मैंने 1999 में किर्बी ज्वाइन की थी. वेल, आई केम एज अ डिज़ाइन इंजीनियर एंड आई वाज द फर्स्ट, नहीं, सेकंड डिज़ाइन इंजीनियर विद किर्बी. एंड आई कैन से आई विल करेक्ट Satish Raipure, I did not bring PV to Nagpur, but I brought it to India. I made presentation right from West Zone air control station at Ahmedabad to Meghalaya, and I have made from Chandigarh to Kanyakumari on PEB. Because one thing, my portfolio was to deal with the consultants as a structural engineer. Most of them were architects and structural engineer. Earlier going to PEB in 96 to Dubai, मैंने structural consultancy यहाँ पे भी की थी. I have done the software development also. So I combined both. Anyway, so it's been 25 years now. और PEB को पहले सिर्फ फैब्रिकेशन स्टेटस दिया जाता था, फैब्रिकेटर के बिरादरी में रखा जाता था. Kirby was the first one to get PEB as an industry status, and we fought a lot for service tax exemptions, excise exemptions, 4%, 8%, 16% of GST, 16%, 18%. All these things, I have been in the process all through the things. So, well, I am doing my own software development in PEB. ऑल्सो. सर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, आपसे बिल्डिंग का साइज दीजिए, सेक्शंस आप लीजिए, सीधे ड्राइंग्स ले लीजिएगा, अगले साल आपको सॉफ्टवेयर दूंगा. ये स्ट्रेट वे ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स, जीए ड्राइंग्स, ऑल थिंग, डिजाइन कैलकुलेशंस, एवरीथिंग यू विल गेट इन मिनट्स. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. अरे यार कोई पिक्चर नहीं है ना, ताली वाली मत बजाओ प्लीज. वी आर डूइंग टेक्निकल सेशन, इट्स अ टेक्निकल सेशन प्लीज. ओके, नेक्स्ट भाई. विदर्भा, आपको एक खास चीज बता रहा हूं. आई वॉज प्रिवी टू द रिपोर्ट्स फ्रॉम फर्ग्यूसन. किर्बी वांटेड टू पुट अप अ प्लांट इन इंडिया इन 97 एंड दे engaged Ferguson's as a market consultant, मार्केट रिपोर्ट निकालने के लिए. आपको सरप्राइज होगा जान के, दे प्रपोज नागपुर एज द फर्स्ट चॉइस. क्यों? नागपुर बॉडी की नाभि है, वी आर सीजी ऑफ द बॉडी, सीजी ऑफ इंडिया. फिर नागपुर में क्यों नहीं आया? जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट साइज, they said one plant will not be sufficient, you need at least 2. They said at least 2. आज 25 साल में उनका तीसरा प्लांट चालू हो चुका है. दिस इज वन. एंड किर्बी हैज कंप्लीटेड, उनका एनुअल क्लोजिंग 31 दिसंबर को होता है. लास्ट ईयर दे प्रोड्यूस्ड PEB 1,98,000 metric ton, which is almost 40% of the market size. This is something what we do. When I joined Kirby, I trained design engineers, I trained detailing engineers, sales engineers,
quality control engineers, production interaction with the standards, establishing detailing standards with which I am working till today. And I will work ever. And those standards I am adopting in my software also. Okay, let's come down to Vidarbha. We are almost 1 lakh square meter, 97,321 ऐसा कुछ तो भी फिगर है विदर्भा का एरिया, बहुत बड़ा है, almost half of the England. We have 11 districts, 2.30 or 20. Here it is 2.3 crore, 2.3 crore suppose. We are Nabi of India. We have 48 industrial hubs. सोच सकते हो कि किसी और स्टेट में होंगे, एक स्टेट के एक पार्ट में. We have MIDC एरियाज, प्राइवेट एरियाज जैसे बंडारा रोड पे बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं. मैं MIDC एरियाज 48 है. वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, माइंस अपने पास, मॉइल है, फेरो आएगा, हेडक्वार्टर्स हैं अपने यहाँ, चंद्रपुर एरिया में कोल है, सब कुछ है अपने पास. फॉरेस्ट, टाइगर टूरिज्म, वी आर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. नेक्स्ट. एंड एनीवे, लेट्स कम डाउन टू स्टील प्लांट्स. लॉयड, JSW, सनप्लेक्स, सनविजय, फैकर शायद बंद हो गया, निको, ऑल दिस थिंग्स. नागपुर इज स्टील मंडी, यू नो. 75,000 मेट्रिक टन यहाँ से स्टील का ट्रेड होता है. 75,000 टन इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट रियली अ जोक. इसमें 10,000 स्टील है, कोल्ड फॉर्म है, शीटिंग है, TMT है, और PAB लगभग अभी 5,000 पर मंथ बनना शुरू हो गया है. वी आई थिंक बहुत हो गया. Fabtech, McGill, major, I am doing for these major steel fabrication units, big structure, all of them, सबके स्टॉल लगे हुए हैं. 50-50 टन की 2-2 क्रेन, 3-3 क्रेन एक मॉड्यूल में चल रही हैं. ऐसे मैंने स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किया है. मैकगल का चालू है, फैब्टेक का हो गया, मेटल फैब का हो गया, डिफ्यूजन का चालू है, और बहुत सारे हैं. सबके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. कुछ तो गड़बड़ है बाजार में, कुछ तो आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, नहीं तो सब एक साथ कैसे दौड़ रहे हैं उस पीछे. दिस इज वन थिंग, वी हैव अ बिग स्टील मार्केट इन PEB कमिंग इन. वेल, PEB, स्टीलोमैक, फेरोमोंग, वोरा, ब्लू लैडर, VN रूफिंग, बजाज, उत्कर्षा. ये सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आधे से ज़्यादा बिल्डिंगें तो मैंने ही बनाई हैं. कम से कम 15 जनों को तो मैंने इंडिया में, महाराष्ट्र में खड़ा किया है, हैदराबाद में खड़ा किया है, बेंगलोर में खड़ा किया है, कम से कम 15 PEB कंपनीज को. ओके, दैट्स इट. लेट्स गो फर्दर. नेक्स्ट प्लीज. PEB मेजर हेवी प्रोजेक्ट कर सकती है, इसका पहला रिकॉग्निशन ये था. दिल्ली मेट्रो, सिस्ट्रा कंसल्टेंट्स, फ्रेंच, जो उनके स्टैंडर्ड से, आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. हम लोग पंच करते हैं प्लेट अप टू 32 mm, पंच करते हैं, ड्रिल नहीं करते. सिस्ट्रा कंसल्टेंट डिड नॉट अलाउ. क्यों? क्योंकि जब आप पंच करते हो तो उसकी एज हार्डन हो जाती है और उसमें माइक्रो क्रैक्स आते हैं और स्ट्रक्चर फेल होता है. सो फ्रॉम कन्वर्टिंग टू पंच होल्स टू ड्रिल्ड होल्स, we asked for something 75 days extra for that project. It was 11,000 metric ton project, 11 stations we did. This was Kirby. That time. We beat L&T and name any top state country, top construction company in India, we beat them all, heads down, and picked up, just because of our facility, which I am going to show you next. See the curvature. ये बनाने के लिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, और सिर्फ इसका, सर ने कहा था PEB डिटेलिंग परफेक्ट होनी चाहिए. वो डिटेलर आज भी, जो चेकर है, आज भी किर्बी के साथ है. अंदाज लगाओ सैलरी कितनी मिलती है? 1 करोड़ रुपया. ये है उसकी सैलरी, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बगैर 1 mm के एरर की करके देता है. दिस वॉज द हिज स्ट्रेंथ. दिस इज द स्ट्रेंथ यू नीड इन PEB. नेक्स्ट. चलो, अपन मेरे को प्रोसेस प्लांट का बारे में बोला गया है. स्प्राउलिंग.
स्प्रॉलिंग को मराठी में आईस पाईस पसरलं आहे म्हणतात, बहुत बड़ा है ना. सो आई विल डिफाइन इट इन स्ट्रक्चर्स एज 3 or 4 parameters. One, either length by width ratio is higher, one of the dimensions is very high, or 2 dimensions are very high, or 3 dimensions are very high, or the plot area itself is very high, too many units to do. That can be the sprawling units. We can call that as a sprawling unit perfectly. किरबी है, पहला बिल्डिंग जब मैं पीबी यहाँ इंडिया में शुरू किया, 125 into 360 मीटर लेंथ. आप यहाँ से जो पीछे तक देख रहे हो वो आधी बिल्डिंग है, आधी इधर है. सो दे हैव प्रोसेस रॉ मटेरियल, कटिंग, पंचिंग, वेल्डिंग एंड फिनिशिंग. ये लीनियर प्रोसेस है. देन कम्स पेंटिंग, देन कम्स शिपमेंट. This is a linear process. So this is first type of processing plant. मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ इसलिए मुझे बहुत आसान है. First type of industrial plant where a sprawling building. अभी मैंने उसके 2 बे और एक्सटेंशन किए थे when I was with Kirby in 2007. Now it is I think 160 meters wide almost. Now in this I am showing you only one section. राइट तो इसमें प्रोसेस क्या होता है पीईबी. सबने बोला कि सिंपल फैब्रिकेशन है. हाँ है, आगे भी है. चल भाई, दिस इज व्हाट यू नीड इन पीईबी. यू नीड प्राइमरी एंड बिल्टअप सेक्शंस और हॉट रोल सेक्शंस, सेकेंडरी यानी कोल्ड फॉर्म सेक्शंस, शीटिंग एक्सेसरीज में मतलब टर्बोवेंट आते हैं एंड सो मेनी थिंग्स, लूवर्स आते हैं, ऑल दोस. warehouse and buyouts. Buyouts यानी warehouse products यानी bolts stock करके रखते हैं. Can you believe किरबी कितना स्टील स्टॉक करके रखता है? 50,000 टन. 3 महीने का कोटा होना. 50,000 टन. आगे के ऑर्डर्स रहते हैं उनके पास क्योंकि लीड टाइम इज 45 days. तो लाख टन का हो गया. अब आप बताओ सर, जब स्टील का रेट धड़ से उन्होंने बढ़ा दिया था 40 से कुछ सीधा 50, किरबी ने कितना कमाया होगा? जस्ट बट रॉ मटेरियल स्टोरेज, दैट्स द कैपेसिटी. एंड इसको बनाने को 1 हफ्ता लगता है. मैंने आपको 4 प्रोसेस बनाया. सेकेंडरी पर रोल ही तो करना है. सुबह चालू करो, लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग रहा, दोपहर तक खत्म हो जाएगा. शीटिंग तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी. एक्सेसरीज पड़ी रहती है स्टॉक में, पड़ी रहती. बट ऑल दीज टू बी शिफ्ट टुगेदर एंड 25 प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली ऑन द फ्लोर. कम नहीं होती. और मैं आपको गारंटी से कहता हूं इनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कभी एरर नहीं हुई. कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कभी एरर नहीं हुई. जितना माल जाना है बरोबर जाता था. कैसे? वो सब घुटे हुए लोग आए थे ना हम लोग गल्फ से यहाँ पे. हमने जो सिस्टम्स इवॉल्व किए थे उसके कारण ये हुआ था. नेक्स्ट चलो, ये दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट. एक बहुत बड़ा एरिया है इंदौर के पास में जिसमें वेयर हाउसेस हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें इतने सारे उनको इंटरकनेक्शन के वॉकवेज हैं. 5 मीटर हाइट से लेकर 28 मीटर हाइट तक अलग अलग टनेजेस हैं. ये प्रिपरेटरी प्लांट है, साइलो है, आरसीसी साइलो है, ये साइलो है, इसके ऊपर वॉकवे है, बेल्ट कन्वेयर्स हैं. सो मेनी थिंग्स आर ऑल. हाइट G+10. अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पकड़ूँ तो 30 मीटर तो है, 50 मीटर की हाइट्स हैं. साइलो 44 मीटर हाइट का साइलो था जिसके ऊपर मैंने कंपोजिट स्लैब दिया जैसा आपने किया. देन उसके ऊपर वॉकवे बनाया. 40 मीटर डायमीटर का साइलो था इसमें. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट. नेक्स्ट इसमें बाकी बिल्डिंग भी दिखाता हूँ. ये लोडिंग अनलोडिंग बे है. इधर ट्रक्स आती हैं, रॉ मटेरियल अनलोड करती हैं. ये प्री क्लीनिंग, ये मील पैकिंग, फाइनल होके बाहर जाना है यहाँ पे. और ये बिल्डिंग को देखो,
8 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर ऊंचा है। मुझे सोचो दोनों तरफ की विड्थ लगभग इक्वल है, दोनों तरफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल आएगा। मुझे बॉक्स सेक्शन के अलावा कोई चारा ही नहीं तक बनाने के लिए। दिस इज व्हाट इट इज। दीज आर द प्रोजेक्ट्स पॉसिबल इन पीबी लाइक दिस। एंड आपको एक ड्राइंग और दिखाऊंगा। एक फ्लोर पे, ये तो छोटा है, पीछे वाला लो, पीछे वाली बिल्डिंग दिखाओ, नहीं पीछे, बैक, यहां पे इमेजिन एक फ्लोर पे कितने जॉइस्ट थे? 212 मेंबर्स की डिटेलिंग बिना एरर के होना, फिर कनेक्टिंग बीम्स वो अलग, 212 जॉइस्ट बोल रहा हूं, बीम्स अलग। दिस इज द एक्यूरेसी वी नीड इन पीईबी एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट। मैं प्राउडली बोल सकता हूं मैंने 750 टन 750 बिल्डिंगें की हैं अपने इसमें इंजीनियरिंग से। एक भी मेजर एरर आज तक नहीं आया है। एनीबडी कैन क्लेम, मेरे साथ काम किए हुए लोग हैं यहाँ पे, पूछ लो, एक भी बिल्डिंग में एक भी एरर नहीं आया। अब आप सोचो एक सिंपल वेयर हाउस में कम से कम 1 लाख छेद होते हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन शॉप ड्राइंग वी नीड। दैट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस I built in Kirby my office, I built in Pennar, I built in Everest, I built in my office. This is what is required. This is what is PEB really. चलो नेक्स्ट, ये इसमें दोनों तरफ से लोडिंग आता है, इसलिए बॉक्स सेक्शन दिया था। साहब ने जब भी बताया वो हल्दीराम का हमने बनाया था। सर ने एक चीज छोड़ दिया, 20 मीटर हाइट की थी, ये नहीं बताया कि फ्यूचर एक्सपेंशन भी था, बीच में 10 मीटर पे और एक डालना है फ्लोर। आप सोचिए 16-16 मीटर के बीम, जिसके ऊपर स्लैब, जिसके ऊपर हेवी लोडिंग 1-1 टन की, और बीच में एडिशनल डालना है। हमने वहां पे भी बॉक्स सेक्शंस दिया था, इन्होंने नहीं बनाया। नेक्स्ट, दूसरा फ्लोर, पहला स्प्रॉलिंग बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, दूसरा स्प्रॉलिंग एरिया, सो मेनी बिल्डिंग्स इंटरकनेक्टेड, तीसरा सोलर पावर प्रोजेक्ट। 1 मेगावाट को 4 एकड़ जमीन लगती है, 3.5-4, डिपेंड्स ऑन ग्राउंड कवरेज रेशियो अलाउड। ओके, 0.3, 0.4, 0.45, दिस इज मैक्सिमम, 0.5 रेयरली मिलता है। ग्राउंड कवरेज एरिया, प्रोजेक्ट साइज 100 मेगावाट तो आजकल मूंगफली हो गया, कोई नहीं करना चाहता। बड़ी कंपनी 250 से ऊपर ही होना। 1 मेगावाट में 30 टन स्टील। मोदी बोलता है 100 गीगावाट है, कैलकुलेशन करो कितने लाख टन स्टील का बिजनेस है अगले 5 साल के अंदर। उतने कोल्ड फॉर्म सेक्शंस हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि उतना रोल फॉर्मिंग ही नहीं हमारे पास। इतना कैपेसिटी अवेलेबल है इंडिया में, मार्केट साइज, because the government is pushing it. This is the level of solar power projects. अभी मैं इसमें आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। ये है फिक्स्ड टिल्ट, अभी बताऊंगा आपको फिक्स्ड टिल्ट क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। ये जस्ट ये है, पर्लिन इज ओनली 0.9 mm thick, राफ्टर इज ओनली 1.8 mm thick। एक टेबल 80-80 मीटर का, 90-90 मीटर का होता है, 120 मीटर का होता है। और फिर अब ये बना हुआ है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमने 4-4 मीटर पे डाला था, 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये राफ्टर है 2.5 मीटर। ओके, नाउ सी दिस टेबल, लेंथ ऑलमोस्ट 120 मिनट। अगर धूल नहीं साफ किया तो फायदा क्या? क्या? Your half the generation is gone. Here mounted another sprawling unit in Nagpur, Dincha. अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। ये पांडे साहब ने बहुत सारी की हैं, उत्कर्षा ने 8-9 बिल्डिंग्स तो इन्होंने ही किया है। और उसके ऊपर छत पे हमने सोलर लगाया 1 मेगावाट। अनदर स्ट्रक्चर 1 मेगावाट सुपर पावर सोलर, YCC यहाँ पे, और उनका जो वहाँ का
वहाँ वर्धा का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये तो सीधा छत पे लगा दिया। घर पे लगाने को आजकल मोदी बोल रहा है ना 1 करोड़ घरों पे बनाएगा। 10 मीटर हाइट का बनाओ, स्ट्रक्चर लगाओ, अपने को 1 फ्लोर फुकट में मिलती है। थिंक ऑफ इट। कभी नहीं करना है सर तलाक से। नेक्स्ट, मैंने अपने घर पे वैसे ही किया, 5 साल हो गए। हाँ बिल्कुल बनाओ, मैंने अपने घर पे बनाया ना। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल ट्रैकर। देखिए जो मैंने पिछले इसमें दिखाया था फिक्स टिल्ट, आपका सोलर जनरेशन दिन में, ये देखो जब सूरज टकली पे होता है तब सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है। नेक्स्ट इज सोलर, ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर टेक्नोलॉजी, जिधर सूरज उधर घूमता है, राइट। सनफ्लावर टेक्नोलॉजी 40%, 15 to 40% एडिशनल जनरेशन सोलर मिलता है आपको। मैं अपने घर का एग्जांपल बताता हूँ, दूर का को जाने का। मेरा सोलर लगाने के पहले घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 4 AC थे, 20,000 22,000 पर मंथ इन अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर। अब 2,000 2,500। जो खर्चा था मैंने तो 2 साल में ही निकाल दिया, सरकार ने मेरे को ऊपर से सब्सिडी भी दिया है। सी द इमेंस पावर। अगर मोदी देता है टेक इट, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट, 1 मिनट पीछे आओ। ये सोलर पावर का प्लांट है। मेरे घर पे सिर्फ 4 किलोवाट का लगाया हूं, वो साफ करने मेरा आदमी जाता ही नहीं है, 1-2 महीने नहीं जाता। ये मैं 100 मेगावाट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, 250 मेगावाट कौन साफ करेगा? धूल तो बैठेगी। ये आया है, इट इज डेवलप्ड बाय, आई एम वर्किंग विद देम। ये आता है, आएगा, इसमें ब्रश होता है, पानी नहीं। जो होटल में नहीं कि जूता साफ करने की मशीन में लगता है, वो वाला ब्रश होता है, ये क्लीन करते हुए जाता है। देन इट इज रोबोटिक क्लीनर बोलते हैं इसको। आपकी ज़मीन ऐसी चलती है, ज़मीन सीधी नहीं रहेगी कभी। हमने वो ट्रैक डेवलप किया है, ट्रैकर। ट्रैकर पे जाएगा, उसको देखेगा, अपने आप लाइन आएगा, चल देगा, साफ करता हुआ। इमेजिन, ये सब, ये प्रोडक्ट आप जर्मनी का लेंगे 5-8 लाख रुपए का मिलेगा, इंडिया का लगेगा 1 लाख रुपए में, उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। दीज आर द रियल डेवलपमेंट्स पॉसिबल। और ट्रैक, हमने कोई रेलवे की ट्रैक नहीं लगाई, सिंपल हॉट रोल सेक्शन घुमा रहे हैं उसके ऊपर। दिस इज द थिंग विच इज कमिंग इन नाउ। ये वाला, अच्छा ये क्यों दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले लिमिटेशन लगाई थी, आप सिर्फ आधा मेगावाट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब गवर्नमेंट उल्टा देती है, आप लगाओ, बनाओ, लोगों को बेचो। पहले एमएससीबी को ही बेचना पड़ता था, आप लगाओ, बनाओ, लोगों को बेचो। और क्या चाहिए यार? दैट्स वाई पीपल आर मूविंग ऑन टू सिंगल ट्रैकर सोलर बिल्डिंग। कैन यू इमेजिन इसका बिजनेस कितना है? इंडियन पीईबी बिजनेस, पीईबी नॉट स्टील, स्टील तो बहुत बड़ा है, इस 0.5 बिलियन टन में, 0.5 बिलियन डॉलर्स, 66 बिलियन डॉलर सोलर का पावर का प्रोजेक्ट है। अब इंडिया में ही लगाओ ना, 100 गीगावाट करोगे, कितना टन, कितना लाख टन जाओगे? 3,000 मेट्रिक टन पर मेगावाट। अब लगाओ, कैलकुलेशन करो। दिस इज द पोटेंशियल इन इंडिया, और विदर्भा इज आइडियली सुटेड फॉर इट। आगे बताऊंगा मैं क्यों। इंडिया में सोलर पावर के 300 दिन तुमको मिलते हैं। विदर्भा हैज वेरी गुड रेशियो इन इट, 300 विदाउट क्लाउड मिलते हैं, क्लियर सन डेज मिलते हैं आपको 300, मतलब ऑलमोस्ट 85% हो गया। और क्या चाहिए यार, कितना मांगोगे? देन वी हैव लास्ट वास्ट ड्राई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नॉन एग्रीचेबल लैंड अवेलेबल, जिनको इन्होंने 18 इंडस्ट्रियल जोन्स में कन्वर्ट कर दिया है। पड़े हैं आपके पास सामने, उठा लो, कर लो, सरकार फुकड़ में दे रही है जमीन। नागपुर के इंडस्ट्रियल का रेट
तो फुकट में ही है। इंडिया बुल सेल कंस्ट्रक्टेड वन इन काटोल इंडस्ट्रियल एरिया, लॉन्ग बैक, 15 साल पहले की बात है। वी हैव ब्रॉट डाउन, जो उसने किया होगा, उसने 100 मेट्रिक टन पर मेगावाट किया होगा। वी हैव ब्रॉट इट डाउन इन वन स्ट्रोक 30। Imagine with the cold form sections how much you can do. Single tracker is preferable because of this. Then maximum solar power projects I have seen, वो फलोदी में जाते हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा वाली जमीन उधर ही जा रहे हैं। डेजर्ट में कितनी धूल रहती है वहाँ। हमारे यहाँ पे रीजन एरिड है, जो वास्ट रेंज है, बट ग्रीन है, घास है, थोड़ी बहुत धूल नहीं उड़ती इतनी। दिस इज एडवांटेज। नेक्स्ट, चलो ये मैंने आपको 3-4 टाइप के अलग अलग बनाया। एक आगे वाला प्रोजेक्ट रायपुर साहब ने बताया, हमने डिज़ाइन किया साथ में, ये सारे पैरामीटर्स इसने बताया। इसमें 621 रिंग्स है और वर्टिकल पोस्ट। इसकी डिटेलिंग के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैंने टेक्ला हैदराबाद, बेंगलोर दोनों तीनों को दिया, नहीं कर पाए। आई डिड इट माई सेल्फ। 3D ऑटोकैड, यूसीएस आता है किसी को? 3D ऑटोकैड यूसीएस करो उसमें। द प्रॉब्लम विद दिस वर्टिकल कॉलम इज इट इज एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में जा रहा है एंड इन आर्क। करके दिखाओ। This is the beauty of this detailing, and whatever detailing we did, it came exactly. I heard Modi is going to inaugurate this. So we are almost on the last level of this. These are the possibilities in steel. अपन वो nested structure बोलते थे, चाइना ने बनाया, अबे नागपुर में बनाया, ये देखो ना, है ना, नागपुर में बनाया। So थिंग्स आर अवेलेबल हियर। इंडिया में बहुत दम है, बहुत ज़्यादा दम है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज आरसीसी पार्ट, हिज बेडक, स्टील डिजाइनिंग पार्ट, माइन एंड हिज बोथ वेटेड बाय इंग्लिश सर। मैंने ये प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील में आई डिड फॉर दिस मॉडलिंग इन स्टेनलेस स्टील फॉर जिंदल स्टील ऑल्सो, लेकिन उनका कॉस्ट फॉरबिडिंग था, बहुत ज़्यादा था, नॉट पॉसिबल। अभी आपको मैं बताऊं कि ये जो कनेक्टिंग प्लेट्स है, वो कनेक्टिंग प्लेट्स की वेल्डिंग करीब 2-2.5 लाख रनिंग मीटर है, और ये 33 मीटर 216 पोस्ट। एक कॉलम की लेंथ करीब 43 मीटर आती है, 33 मीटर है, लेकिन ड्रम 43 मीटर जाती है। इमेजिन वी हैव डन ऑलमोस्ट 1100 मेट्रिक टन इन दिस। ये प्रोजेक्ट दिखाना आपको एक स्पेसिफिक कारण है। चले यार आगे। हाँ, मुझे प्रोसेसिंग प्लांट का बताया गया, मैं पीईबी का बाद में बताता हूँ। प्रोसेसिंग प्लांट में अपने को क्या क्या करना पड़ता है? सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, पहला कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल इक्विपमेंट, किरबी, सिंपल वाला बताता हूँ। वेरिंग आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, अगेन किरबी। अनदर प्रोसेसिंग प्लांट आई शोड ऑफ एबिस मल्टी स्टोरेज वाला, बदनावर। मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स, सिंगल प्रोडक्ट, अगेन दैट बदनावर। मल्टीपल कंपोनेंट्स यू हैव टू डिलीवर वंस एट ए स्ट्रोक, किरबी। अपनी बिल्डिंग 1000 टाइप के कंपोनेंट्स होती है। हमारे एक वेयर हाउस की शिपिंग लिस्ट देखोगे तो 12 पेज की होती है। एक सिंपल वेयर हाउस, अभी तो हम ये ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये इतना बड़ा तो शिपिंग लिस्ट का पेजेस होता है, 100 पेजेस के करीब जाता है। एक लाइन मतलब एक पेज में 50 करो एंट्रीज, करो देखो। दिस इज द स्ट्रेंथ वी नीड। सो मल्टीपल एंट्रीज एंड सो मेनी वेरिएशंस आर पॉसिबल। मैंने तो आपको 4-5 टाइप की तो स्प्रॉलिंग के एग्जाम्पल बता दिया। हाँ खत्म, अभी करते हैं।
सिंगल प्लांट बिल्डिंग, मल्टीपल प्लांट बिल्डिंग, मल्टीपल प्लांट यूनिट्स। ये बताओ, फैब्रिकेशन एक जगह रखो, गैल्वेनाइजेशन दूसरी जगह रखो, क्योंकि करोजन तुमको चौपट कर देगा, स्ट्रक्चर खा जाएगा। अमित आशा वालों से पूछ लो, उन्होंने, उनको भी सोलर में मैं ही लेके आया। सो दीज आर द पैरामीटर्स यू नीड। सर बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। फ्लो चार्ट पहले इनपुट टू आउटपुट का हर मशीन का लेआउट चाहिए आपको, हर मशीन की कॉलम लोकेशन चाहिए, हो चाहिए, लोडिंग चाहिए, इंटरकनेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ग्राउंड कवरेज रेशियो, एक्सेस, सर्कुलेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब जने जानते हैं। ये मिनिमम प्रोसेस होते हैं। चल भाई, देन व्हाट आर द प्लानिंग फीचर्स। मुझे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मुझे ज़्यादा नहीं, वो इसका काम है, संगी साहब का काम है, हमें इसका काम ज़्यादा है। लोडिंग हमारे कितने टाइप की होती है? पॉइंट लोड, लीनियर लोड, एरिया लोड। वॉल्यूम लोड इसलिए दिखाया, वो शेल वाला जो ड्रम दिखाया ना आपको, वो उसमें हमने ट्रिपल लेयर कॉलम स्ट्रक्चर बनाया, 3 टियर स्ट्रक्चर है वो, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये आड़ा, 3 टियर स्ट्रक्चर है वो। नॉर्मली शेल्स या स्पेस फ्रेम सिंगल टियर स्ट्रक्चर बनता है, हमने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। जमीन पे लगा तो जान दे जमीन में आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइस्मिक, कभी ऐसा ना हो कि कोई बिल्डिंग आप बेंगलोर के लिए डिजाइन करो और जाके कांडला में खड़ी कर दो, गए आप। वहाँ का विंड नागपुर, वहाँ से बेंगलोर से 2.25 टाइम्स है, वहाँ का साइस्मिक वहाँ से 3 गुना है। सो पीबी में ये पॉसिबल है कि यू कैन शिफ्ट द बिल्डिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, बट corollary is it should be done in the same seismic and the same wind zone. If you are going to hire one, be sure you have to strengthen it, क्योंकि पीबी बिल्डिंग बहुत ऑप्टिमम डिजाइन करते हैं। एडिशनल कुछ करने के जाओ बेटा, गए। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग एक एक फ्लोर में 270 जॉइस थे, बीम्स अलग, कॉलम्स देख लो कितने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एक फ्लोर में ऐसा पूरा है, दूसरे फ्लोर में बस इतना सा है, तीसरे फ्लोर में इतना सा ही है, इधर नहीं है। इमेजिन द डिटेलिंग एफर्ट वी टेक इन दिस। एक भी एरर नहीं आई है फैब्रिकेशन में, इतनी प्रिसाइज ड्राइंग्स बनाई है हमने, बिकॉज आई इंस्टॉल्ड 4 tier checking in Kirby. Same is rigorously followed in my office. 4 tier checking चलेगी, 1500 metric ton। हाँ, मल्टी स्टोरीड का एक कैरेक्टर होता है। आवर आई सेक्शन माइनर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ 5% होता है या उससे भी कम होता है। नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर्स में 1% आता है। अब ये बिल्डिंग देखो ऑलमोस्ट स्क्वायर है, ऑलमोस्ट स्क्वायर है, तो विंड तो दोनों तरफ से आएगा, मोमेंट दोनों तरफ से आएगा। माइनर एक्सिस में मोमेंट कनेक्शन कैसे करोगे? दैट कनेक्शन डिजाइन इज वेरी क्रिटिकल। माइनर एक्सिस में कर रहे हो, कितने सिविल इंजीनियर्स हैं आप? हैं? माइनर एक्सिस में मोमेंट कनेक्शन नहीं किया जाता, शेयर कनेक्शन करते हैं। माइनर एक्सिस में मोमेंट कनेक्शन है। चल भाई, अगेन सी दिस, सो मेनी प्रोसेसिंग यूनिट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये सतीश साड़ी है, लेडीज को देखना हो तो सतीश साड़ी चले जाओ, मेरा स्ट्रक्चर है, मैंने बनाया है। नेक्स्ट, दिनशा आइसक्रीम, वो भी खाओ, कभी कभी ट्रीट भी खाओ, मैंने बनाई है, ट्रीट भी खाओ। ओके, कोल्ड स्टोरेजेस, दिस इज द बिगेस्ट requirement of India. You know, India produces 130 million metric ton, 130 million metric ton fruits and fresh vegetables. ये फिगर मैं आपको 15 साल पहले का बता रहा हूँ, जब मैं किर्बी में था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। अभी ज़्यादा होगा। कितना वेस्ट होता है? 70%, 70% वेस्ट होता है। जाइए बाजार, सब्जी मंडी में शाम को, रात को जाओ 10 बजे,
आपको टमाटर 2 रुपए किलो मिलेगा। हाउ मच वी नीड दिस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। कैसे करना है, बड़े बड़े क्यों बनाते हो, छोटे छोटे बनाएंगे ना, बताता हूं आगे भी। चलो नेक्स्ट, बेंगलोर मेट्रो। नागपुर में मेट्रो स्टेशन, आई डिजाइन 7 स्टेशन ऑन सेंट्रल एवेन्यू, एंड आई कैन टेल यू नागपुर के लिए हमको जो डिजाइन स्टैंडर्ड्स दिए गए और जो दिल्ली मेट्रो का है वो डिजाइन स्टैंडर्ड्स है, अगर उससे करूं ना, एक भी स्ट्रक्चर पास नहीं होगा नागपुर का। दिस वॉज द स्ट्रिंजेंट कंडीशंस imposed by सिस्ट्रा इन दिल्ली मेट्रो। नागपुर में तो बहुत डाइल्यूट किया गया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया गया। सी द स्ट्रक्चर, 114 मीटर, यानी मुझे ये डायरेक्शन में भी अलोंग द विड्थ भी एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ा। 120 मीटर तक है, पर कंसल्टेंट वांटेड 90 मीटर, हमने यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट दिया है। हिलना चाहिए। दिस वाज 1800 मेट्रिक टन प्रोजेक्ट, दिस वाज 1100 मेट्रिक टन प्रोजेक्ट। यहाँ पे वॉकवे हैंगिंग है, ये देखो इधर पे हैंगिंग वॉकवे, ऑल दिस। नेक्स्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे को दिल पे बड़े करीब है। मैं दुबई में ये बिल्डिंग में रहता था जब वहाँ डिजाइनर था। मुझे समझ में नहीं आता, हमको बड़ी गंदी आदत है, कंक्रीट के ही फ्लाईओवर्स बनाते हैं। ऐसे बनाओ ना यार, देखो कॉलम लाया, गर्डर लाया, ये गर्डर लाया, ऊपर प्रीकास्ट स्लैब डाल दिया, या डेकिंग अपना कंपोजिट डेक पैनल बताया जो सर ने बताया। 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट में 1 महीने के अंदर कर, 1 महीना ज़्यादा हो गया, 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ। क्यों? मुझे कॉलम प्लांट में बना के लाऊंगा, 1 दिन में 100 खड़ा कर दूंगा विथ क्रॉस गर्डर, उसके ऊपर गर्डर सारे प्लांट में बना के लाऊंगा। बचा क्या? इतने बड़े बड़े मेट्रो के आरसीसी प्रीकास्ट गर्डर्स बनाया हूँ, इतने बड़े बड़े। प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ के कंसल्टेंट्स को 30 मीटर के नीचे स्टील गर्डर बनाना ही नहीं बोलते। क्यों नहीं बनाना यार? ऐसे बनाओ। कितने वॉकवे बना सकते हो, कितने इंटरचेंजेस चाहिए? नागपुर में आपको कम से कम 50,000 तो इंटरचेंजेस मिलेंगे जहाँ पे आप ये बना सकते हो। 50,000 लॉ कॉलेज चौक पे बनाओ, जो फ्लाईओवर होगा उसके नीचे से बनाओ, अगले चौक पे बनाओ, उसके अगले चौक पे बनाओ, उसके अगले चौक पे बनाओ। कितने मिलेंगे? 1-1 महीने में बन जाएगा। फाइल बनाओ, वो लाके खड़े कर दो। कितनी देर लगती है? आई डोंट नो व्हाई द कंसल्टेंट्स हैव द सो मच फैंसी अबाउट द कॉन्क्रीट ब्रिजेस। गो फॉर स्टील यार, कितना चीप है। एट द टाइम कॉस्ट टू इट। एंड वन मोर थिंग, यूएस में प्रिस्टेज girders have lost their strength in time. They are replacing it with steel. प्रिस्टेज गर्डर गए काम से, क्योंकि एजिंग में वो जो बॉन्ड चाहिए हो गया। दिस इज व्हाट इट इज। सो गो फॉर दिस। 3 लेन वाला चाहिए, 11 मीटर का बनता है। 9 मीटर की हमारी 3 लेन, फाउंडेशन 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 11 मीटर लगा दिया। कितना आसान है बनाना। गडकरी साहब के पास जाएंगे अपन ये लेके। चलो नेक्स्ट। ओके, मैंने आपको अभी भी कोल्ड रूम का एग्जांपल बताया। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाते हो? एक छोटा सा 100 स्क्वायर फुट का बना लो, ये कोल्ड फॉर्म सेक्शंस का पॉप पैनल लगा लो, 30 mm का, छत पे सोलर लगा लो, मस्त ठंडा रहेगा। गांव वाले आएंगे, सब्जियां देंगे, रात को तुम्हारे पास रखेंगे, अगले दिन सवेरे निकल के फिर से बेचेंगे। यू आर हेल्पिंग एग्रीकल्चर एट द माइन्यूटेस्ट लेवल पॉसिबल। दिस इज व्हाट मोदी वांट्स। कोल्ड फॉर्म सेक्शन है, देखो यहाँ कोई क्रेन नहीं है, एक सेक्शन 25 किलो का है, कोई भी कंधे पे उठा के लेके जाता है। अब ये कहाँ बनाया था? ये नागपुर की शीटिंग है। ये है यूएन का प्रोजेक्ट। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था, आई वाज हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। 160 हमको ऐसे शेल्टर्स बनाने थे, आंगनवाड़ी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एल&टी ने हाथ खड़े कर दिया। क्यों? 160 एक सिटी से लेके दूसरे
सेंटर तक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना लॉजिस्टिक्स करेंगे? पानी नहीं, पूरा डेजर्ट में, कच्छ में बनाया, पानी नहीं है। दिस इज व्हाट वी डिड। इसके अंदर हमने इंसुलेशन डाला है, रॉकवॉल इंसुलेशन 10-12 रुपए फुट है, बाकी तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है। नो वेल्डिंग, नो वेल्डिंग। हमारा धंधा वेल्डिंग का है, लेकिन हम वेल्डिंग अवॉइड करना पसंद करते हैं, क्योंकि साला बहुत पैसा लगता है उसमें, बहुत टाइम लगता है, बहुत डिटेलिंग लगती है, इसलिए वी प्रिफर बोल्टेड कनेक्शंस। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग, कभी कभी होते हैं आर्किटेक्ट लोग, सॉरी सर, सर्कुलर से बड़ा शौक, बड़ा शौक। ये लोकवंत की बिल्डिंग हमने नागपुर में बनाई थी, 70 मीटर, किरबी रिफ्यूज्ड। मैंने दुबई में की थी, मैं लड़ गया, बना के दिया। ये 45 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर बना दिया। जैन साहब, हाँ तूने पीएमसी किया, गुड। ये मेट्रो अपन यहाँ पे बना रहे हैं इसे। ये बिल्डिंग निको स्मेल्टर प्लांट, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे पूरे फैशिया में ग्लास लगा हुआ है। स्मेल्टर प्लांट में कौन ग्लास लगाता है यार? सेकंड चीज, सेकंड प्रोडक्ट, ये कर्वेचर ऐसा बनाया था, यहाँ पानी जमा हो रहा था, मुझे आर्किटेक्ट से लड़ना पड़ा और उसको सीधा करना पड़ा। अच्छा, उसने एक बनाया क्यों? क्योंकि उस आर्किटेक्ट ने कभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया नहीं था, वो कहीं तो भी एक पीएमसी करता था, जिसने त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट बनाया। वही वाली बिल्डिंग ऐसी बनी है। नागपुर का जाइए, बॉम्बे जाइए, वो वाला B1 टर्मिनल T1 वैसा है। दूसरी चीज, कर्विलिनियर छत पे कभी मत बनाओ। अबे सोलर कहाँ लगाओगे? कितना पैसा लगता है यार इसमें। ये छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ते हैं, आर्क ऐसी बनानी पड़ती है, रियल टाइम एक्चुअल मॉडल बनाना पड़ता है। प्लॉटर पे उत्ते बैठ के टुकड़े टुकड़े प्रिंट करो, चिपकाओ, फिर करो। किरबी का हमने वैसे ही बनाया था, ये भी वैसे ही बनाया। ये सारी ऑफिस, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 डायरेक्शन में क्रेन चलती है, ये वे में यहाँ पे भी चलती है और बाकी बिल्डिंग में अच्छी जगह से चलती है। यहाँ स्टार कॉलम दी है। नेक्स्ट, आपने फायर सेफ्टी की बात की थी। 2 ही मतलब लेजिटिमेट जो रियल फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, 2 ही। एक जो आपके माइक्रोवेव में के अंदर लाइनिंग लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं इंटुमिनेसेंट पेंट। रिलायंस ने अपनी बिल्डिंग में लगाया है, वो लगा सकता है यार, 11,000 टन का बिल्डिंग है, रिलायंस कर सकता है। वो इंटुमिनेसेंट पेंट, स्टील का फैब्रिकेशन कॉस्ट हमको 75,000 पड़ा, इंटुमिनेसेंट पेंट का 1.5 लाख रुपये पर टन पड़ा। चलो, दिस इज बीइंग डन इन नागपुर, was done in Nagpur. वर्मिक्यूलिन पे कोटिंग मिनिमम होती है 8 mm, जिसका कॉस्ट स्टील के टनेज के बराबर होता है। उसमें आपको आधा घंटे का मिलता है। और बढ़ाना है तो थिकनेस बढ़ाते जाओ, 12 mm तक जा सकते हो। कॉस्ट बहुत रहता है। 45 मीटर 45 रुपीज़ per square meter or per foot. I'm not very sure about it. But this is done in NCI. अपना ही आदमी है वो भी, निकमा, वो बॉम्बे वाला है। चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, ये सब मैंने बहुत सारे बताया, ये इन्होंने बताया जो 8 कंसेप्ट क्यों चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इन्वॉल्विंग एंड कंसिडरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, जो आपने बोला था एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब जब आप कंसीव करते हो, जैसे हमने दिल्ली मेट्रो का किया, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हम लोग उस जमाने में हैदराबाद टू दिल्ली 55,000 रुपये लेते थे। 20 टन का एवरेज लेके ट्रेलर, 40 फुट वाला ट्रेलर। जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, एक ट्रेलर में 8 टन से ज़्यादा है ही नहीं। कितना खर्चा किया मैंने? दैट वन सिंगल आइटम वॉज लॉस। But here you need for everything 1%. Next. This is very important. Please each one read carefully. I will read it for you. It is unwise to
पे टू मच, इंडिया में तो कोई नहीं देता, नहीं तो हर कोई मर्सिडीज खरीदता था. बट इट्स वर्स टू पे टू लिटिल. When you pay too much, you lose only little money, that's all. When you pay too little, you sometimes lose everything because the thing you bought was incapable thing it was bought to do. बूटी बोरी में एक मेज़ेनिन स्लैब इसके कारण गया. The common law of business balance prohibits paying a little and getting a lot. It cannot be done. यार चप्पल आपको अगर बाटा का जूता लेना है तो 1200 रुपया देना ही पड़ेगा ना. 200 रुपया दूंगा तो कानपुर का ही मिलेगा ना, कहाँ मिल सकता है. Be very clear in your mind. Things are very clearly settled. बहुत हो गया वो सब. If you deal with the lowest bidder, it is well to add something for the risk you run. Time wise, material wise, something wise you will do. And if you do that, you will have enough to pay for something better. इसका मैं कम से कम 3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स का फेलियर नागपुर में हुआ है इसके कारण. Because they did not subscribe to common business sense, common business law. चल भाई next. Thank you. अबे ताली मत बजाओ. नहीं पता नहीं, मेरे को पता नहीं कितने का मिला. One more thing. 5 कैरेक्टरिस्टिक पीईवी की जो सर ने बताई आपको, मैं समराइज कर देता हूँ. फर्स्ट, यानी हम लोग जो बताया करते थे, ऑप्टिमम डिजाइन तो है ही, फास्ट है मतलब स्पीड है, क्वालिटी है, कलर और एस्थेटिक. क्यों? लड़कियां सुंदर खूबसूरत हो तो पेंटिंग की क्या जरूरत है यार, मेकअप की. हम पीबी की बिल्डिंग वो करके बेच देते हैं स्टार्टिंग में. इंडस्ट्रियल पुरानी फोटो दिखाओ और हम अपनी पीबी की बिल्डिंग दिखाते थे. देखो आपको कुछ एडिशन पे नहीं करना पड़ता. मान लो मुझे अलग अलग कलर की शीटिंग है, अलग अलग डिटेल लिख के दूंगा, नो एडिशनल कॉस्ट. दिस इज व्हाट इज इन पीईवी. पीछे चल, पीछे चल. एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज, कोल्ड फॉर्म वाली बिल्डिंग. आगे आगे, हाँ यहाँ पे देखो इसका कितना यूज है. मैं उसको हेल्थ सेंटर बना सकता हूँ गांव में, जैसे ये है. मैं इसको डिफेंस शेल्टर बनाता हूँ. मुझे सीआरपीएफ वहाँ से छत्तीसगढ़ से रिक्वायरमेंट आया था, बुलेट पियर्स नहीं होनी चाहिए. बोले 2 mm स्टील की शीट पियर्स नहीं कर सकती बुलेट. मैं बोला ठीक है, 1 mm अंदर लगा देंगे, 1 बाहर लगा देंगे. हो गया. कोल्ड रूम बनाना है अपने को शनिवारी बाजार में, पॉप पैनल लगा दूंगा. आइसक्रीम पार्लर बनाना है, मोटा पॉप पैनल लगा दूंगा. क्लासरूम बनाना है, अंदर से बैसन पैनल लगा दूंगा, इंसुलेशन लगा दूंगा. एक बिल्डिंग कई यूज होते हैं कोल्ड फॉर्म में. टाइगर रिजॉर्ट मैंने इसलिए बोला था, टाइगर टॉपिक मैंने इसलिए निकाला. बहुत रिजॉर्ट बन रहे हैं अभी, ये यूज करो. जिस दिन चाहिए हटा कर बेच दो. सो इजी. व्हाई डू नीड आरसीजी कंस्ट्रक्शन एंड स्टील कंस्ट्रक्शन. ठीक है. और ऑप्टिमम कैसे होता है? कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 6 मीटर सेंटर स्पैन मैक्सिमम रहता है, क्योंकि आपका हॉट रोल सेक्शन ही उतना लंबा रहता है. अपन तो 7.5 के नीचे बात ही नहीं करते. 7.5, 8, 8.5, 9, 10. डेफिनेटली मैं उतना फाउंडेशन कॉस्ट बचा दी. सिंपल. सेकेंड, योर पर्लिन, हॉट रोल पर्लिन मिनिमम फॉर 6 मीटर ISMC 125, L1.25 kg पर मीटर. मैं अपना कोल्ड फॉर्म पर्लिन लगाऊंगा 4.2 kg पर मीटर. कितना बच गया? 1/3. दीज आर सो मेनी. ये तो डिपेंड करता है कि आप डिजाइन कैसे करते हो, आपको एस्थेटिक कैसे चाहिए हो. सामने की शीटिंग हटा दो, ग्लास लगा दो, मस्त ऑफिस बन गया, अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग बन गई. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने, जो अपन ने छत्तीस के साथ किया था पहला शक्ति. नीचे का दीवार हटा दिया, ग्लास लगा दिया, हो गया. सी थिंग्स आर पॉसिबल. इनॉर्मस फैसिलिटीज आर पॉसिबल. इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज आर देयर. दिमाग लगाना पड़ता है, वरना एयरपोर्ट
पार्किंग का कॉलम आरसीसी का बना है 12 मीटर का, 2-2 मीटर करके 24 कॉलम बनाने को 2 साल लगा दिए, और ऊपर से एसीपी पैनल लगा दिया। अबे तो आरसीसी बनाया क्यों? स्टील बना देता, एक दिन में 24 खड़े कर देते, 2 साल बर्बाद कर दिया उसने। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कंसेप्चुअलाइज द प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग, वरना पैसा तो ओनर को ही देना पड़ेगा। दिस इज वॉट इट इज, दैट्स वाई पी इज यूज। सेकेंड रीजन वाई पीईबी हैज सो मच ग्रोन, लेबर क्यों नहीं है? कल्प्रिट इज मनरेगा। आज से 8 साल पहले का बिजनेस इंडिया पढ़ लो, उसने दिया था 8 साल पहले मनरेगा के कारण सभी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स इन बॉम्बे वर डिलेड बाय 18 मंथ्स। ये फैक्ट है, इसलिए पीईबी चल रहा है। राइट? कोई सवाल? ज्यादा मत पूछना भाई। ठीक, थैंक यू। Thank you. I would take honor to thanks all the speakers, especially, yeah. Soon we'll start with the questionnaires also. So as we have gone through a lot of knowledge, starting from how PEB started, how we have revolutionized, then we saw complex structures and composite structures, then we saw great innovative buildings, then we saw sprawling superstructures. I think this is a great opportunity for all of us, because it's very rare that we have good such elite speakers with us. And I think there are a lot of designers, detailers, youngsters who would like to take this opportunity. So I would like to see some hands raising up, especially. Yeah, okay. Can we pass on the mic? Please, I would like to welcome. This is a great opportunity. I feel you should, because as in I am moderating this session, otherwise I would have been the one to ask a few more questions. So I think I'm audible. Yeah. Yeah, I think this discussion is incomplete. I want to bring one more topic into it. I like to add PEB can be used as affordable housing at low cost, lowest time, and highest customer satisfaction. Because I am working on the project, or you can say the startup. So where I want to 1,000 square feet of the house can be built in 15 days at lowest cost and at the highest customer satisfaction. Like, We have done one housing colony in Gujarat in face of that earthquake, और मैंने आपको कोल्ड फॉर्म बिल्डिंग दिखाया है। सुनाई दिया? Yes, yeah. But we have done one colony of 400 houses in 3 months, inaugurated by, उस टाइम पे वो कौन थे? सिंह साहब, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनके तहत हमने बनाया था। 400 घर हमने 3 महीने में बना के हैंड ओवर किया। पॉसिबल है। अभी तो दिखा है आपको कोल्ड स्टोरेज, ये वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर। But in terms of startup, if you go to the customer, so they how they will convinced. कैसे वो लोग मानेंगे इस बात को? Actually, in Indore, similar affordable housing schemes has been constructed, multi-storied. Okay. And स्टील में भी है, स्टील में है, और उसमें प्रिकास्ट किए, उसमें वॉल पैनल्स यूज किए इंस्टेड ऑफ ब्रिक मेसनरी, वॉल पैनल्स यूज किए गए उसमें, बट स्टील इज लिटिल बिट कॉस्टली एज कंपेयर टू आरसीसी। Only advantage of this type of multi-storied steel building is the time. Okay. so I think his was not a question, he was rather suggesting. No, one thing I will like to just explain that. आपने जो बताया it is possible, but steel PEB के अंदर में multi-story housing is not a very profitable venture because spans are very small. इतना करेंगे तो it will be very costly, and secondly RCC precast is already available. You can go up to any amount of floors in that, and that is very cheap as compared to steel PEB. RCC precast is much more cheaper.
because of affordable housing is very 270 square meter, 350 square meter. So in that, it's a very small, and with these very small enclosures are there. So PEB is not a good proposition there. Additional connection cost is more than 20%. That kills all the economics. That 20% of additional connection cost, that kills entire economics for small housing spans. So at the conclusion, we can't do the affordable. We can do it. R&D करेंगे. As Ramesh sir has said, cold form, research on cold form, because he has shown nice example. I think, in fact, I am inspired that such kind of cold forms, cold storages with solar on roof, it's, I think, a brilliant idea. It's a takeaway for me. Any more questions? You're missing this golden opportunity. It's great. You know, 4 different people rarely come on this single platform. Anybody? No? So I would request President Steel and Hardware Chambers, Vidarbha, Mr. Rajesh Sada, to come up on the stage. I'll request Vice President Steel and Hardware Chambers, Sanjay Agarwal ji, to come on the stage and present the memento to our speakers. And I would take this opportunity to thank them also, because it was great that we have got this knowledge at a single point. I'll tell you, it takes a lot of efforts to bring such a knowledge on single platform and learn so many things at a single point. I thank you all, and I think they deserve a long applause. Hello. So, no, I would request, starting with Satish Raipure, sir, please. Dr. Sushil Sangi. Architect Prashant Deshmukh, sir. And lastly, very rarely found on social platforms, Ramesh Mekrajani, sir. Thank you so much. Because I was searching his photo to upload on the session's cover page. I had to literally ask him for a photo to send me because I couldn't find his photo either on Facebook or either on LinkedIn. So I have asked him to give me the project to bring him on social media. Okay. It's time for a photo op. Yes, yes, we can. And anybody from design forum would like to take an opportunity to have a photograph with all the speakers, they can also join us. This is a very rare moment. You will not find a lot of speakers together. Please come, take the advantage.
And request photographer to take a little step back so that we all can come in together. This small community we have. Thank you.